Are you understanding everything now? क्या आप सब कुछ समझ रहे हैं धीरे धीरे? Is all of your confusion going? क्या आपका भ्रम दूर हो रहा है? Everything crystal clear? सब कुछ शीशे की तरह साफ हो रहा है? No doubts? कोई संदेह नहीं है? All doubts gone? सारे संदेह जा चुके हैं? You look confused by my questions. आप लोग भ्रमित लग रहे हैं मेरे सवाल से। Hare Krishna. Hare Krishna. I heard there were some devotees out here that I should come and talk to, so I thought I'll come out and join you and discuss with you about Krishna consciousness. मैंने सुना कुछ भक्त बाहर हैं, कुछ इंतज़ार कर रहे हैं, तो मैं सोचा कि मैं आकर कृष्ण भावनामृत के बारे में थोड़ा चर्चा करूं आप लोगों के साथ। And I heard there was many points, some questions that devotees had over the last couple of days that were not answered. और मैंने ऐसा सुना कि कुछ ऐसे भक्त हैं जिनके कुछ सवाल हैं, कुछ संदेह हैं जिनका अभी तक उनको उत्तर नहीं मिला है। So I thought we'll try to, by the mercy of Guru Krishna, try to simplify and clarify. गुरु और कृष्ण की कृपा से हम उसको और सरल बनाएंगे और थोड़ा साफ करेंगे इन चीज़ों को। So do you have any questions? Everything clear? क्या कोई सवाल है किसी का या सब कुछ साफ? Ivan, you're Jnani, you're an intelligent man. आइविन आप ज्ञानी हैं, Everything बहुत clear? व्यक्ति हैं, सब कुछ साफ हो चुका है? Crystal clear? शीशे की तरह साफ? Huh? Saying little bit, something. Something. Oh, that's so simple response. बहुत सरल आपने प्रतिक्रिया दी है। Okay, let me start then, since you're being shy with me. आप लोग थोड़ा शर्मा रहे हैं, तो चलो मैं शुरुआत करता हूँ। I'll try to get you a little warmed up मैं आप लोगों को थोड़ा अभी गर्मी दूंगा and try to simplify it as much as possible. जितना हो सके सरल बनाने का प्रयास करेंगे। My Gurudev, many times he said this is not very difficult. मेरे गुरुदेव कई बार कहते हैं ये बहुत मुश्किल नहीं है। It's actually quite simple. यह सब बहुत सरल है। And it's so simple, और ये इतना सरल है you might just miss it. कि आप इससे बच के निकल जाएंगे। Because we have become too complicated. क्योंकि हम लोग बहुत जटिल बन चुके हैं। We have lost a simplicity. हमने सरलता खो दी है। If we're very simple and pure-hearted, then Krishna would give us directly good intelligence and good advice. अगर हम सरल और शुद्ध हृदय वाले हैं, तो कृष्ण हमें सीधी बुद्धि देंगे। Because he's the seed-giving father. क्योंकि वो बीज प्रदाता पिता है। And he's a well-wishing friend of every living entity. और सभी जीवात्माओं के शुभचिंतक मित्र हैं। And he knows we're suffering here with uncontrolled mind and senses in the Maya Jagat. और वो जानते हैं हम इस माया जगत में अनियंत्रित मन और इंद्रिय के वजह से दुख भोग रहे हैं। And he knows he created this place to be temporary and miserable. और वो जानते हैं उन्होंने इस जगत को अस्थायी और दुखमय बनाया है। Like a prison house. जैसे कारागार होता है। Inflicting so many types of miseries, gross and subtle, pains and punishments onto us. और बहुत सारे दुख, कष्ट स्थूल रूप से या सूक्ष्म रूप से हमें दिए जा रहे हैं इस भौतिक जगत। Just like loving mother and father has to discipline the children. जिस तरह प्रिय माता और पिता अपने बच्चों को अनुशासन में लाते हैं। They would rather just explain everything in a very, sweet and loving way. वो चाहते हैं कि बहुत प्रेममय और मधुर तरीके से सिखाया जाए, समझाया जाए। But because the children are not smart enough and also still very rebellious, then not listening nicely. और कई बार जब बच्चे ज़्यादा बुद्धिमान नहीं होते हैं और सुनते नहीं हैं ठीक से, तो जो है उनको दूसरा तरीका अपनाया जाता है। So some type of discipline, some type of punishment is required. तो किसी तरह का अनुशासन और कुछ दंड देना पड़ता है। In order to get our attention. ताकि हमारा ध्यान खींचा जा सके। And to humble us. और हमें विनम्र बनाया जा सके। And to control us. हमें नियंत्रित किया जा सके। So that we'll listen to good advice. ताकि हम सही सलाह को सुन सकें। So Krishna, like loving mother, father, he's trying to give very nice advice to us. तो कृष्णा प्रिय माता पिता हैं हमारे, वो हमें अच्छी सलाह देने की कोशिश कर रहे हैं। And Krishna says, I'm in the heart of every living entity, and from me is coming knowledge and intelligence. और कृष्ण कहते हैं मैं सभी जीवात्माओं के हृदय में हूँ और मुझसे ज्ञान और बुद्धि आती है। And Krishna is saying to Arjuna, touch Trinu,
just hear from me. और कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं तत् शृणु, मुझसे श्रवण करो। By my guidance you'll overcome all of the obstacles and difficulties in your life. और मेरे दिशा निर्देश से तुम अपने जीवन के सारे परेशानियों, सारे रुकावटों से बाहर आ जाओगे। But because we're not simple लेकिन क्योंकि हम सरल and we're नहीं हैं not pure-hearted, और शुद्ध हृदय वाले नहीं हैं, we have become blind. हम अंधे हो चुके हैं। And we've developed this pride and arrogance that we think we know. और हमने ये अहंकार और गुस्सा प्राप्त कर लिया है और हम सोचते हैं हम सब जानते हैं। We think we know what is best for ourselves. हम सोचते हैं हम जानते हैं हमारे लिए सबसे श्रेष्ठ क्या है। In fact, the illusion is we think we belong to ourselves. और माया यहाँ तक प्रभावी है कि हम सोचते हैं हम खुद के हैं। Or not understanding that body, mind and soul belongs to Krishna. हम ये समझ नहीं रहे हैं शरीर, मन, आत्मा ये कृष्ण की है। And we were created to engage in His loving devotional service. और हमारा That's the निर्माण only purpose for our being. और हमारा निर्माण किया गया है उनकी प्रेममयी सेवा करने के लिए, भक्ति करने के लिए। यही उद्देश्य है हमारे निर्माण का। But Maya is making us forget. लेकिन माया हमें सत्य से भुला दे रही है। And because of false ego and pride and arrogance, और मिथ्या अहंकार और दंभ और गुस्से की वजह से this is making us spiritually blind. ये हमें आध्यात्मिक रूप से अंधा बना रहा है। So spiritually we are deaf, dumb and blind. आध्यात्मिक रूप से हम बहरे, गूंगे और अंधे हैं। But because of pride and arrogance, we said, no, I'm not deaf, dumb and blind. लेकिन अहंकार में, दंभ में और गुस्से में हम कहते हैं मैं अंधा, गूंगा, बहरा नहीं। Sounds like a lot of pleasure, huh? सुन के लग रहा है बहुत आनंद मिल रहा है उन्हें। You want to get born in another mother's womb and take another birth in material world? आप फिर से किसी माँ की कोख में जाना चाहते हैं दोबारा और फिर से भौतिक जगत में जन्म लेना चाहते हैं? We want to go through this all over again? क्या आप फिर से इन सब चीज़ों से दोबारा गुजरना चाहते हैं? Old age, disease and death? बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु, This is real problem. ये असल समस्या है। But if you ask people what is your problem, in callousness, they'll say, I don't have any problem. I'm fine. I'm doing pretty good. और अगर आप किसी से पूछोगे कि आपकी कोई समस्या है जीवन में, सब कुछ ठीक है, तो वो कहेंगे कि मेरी कोई समस्या नहीं है, हमारे जड़ बुद्धि की वजह से। They have a money problem. कुछ लोग कहते हैं हाँ मेरे पास पैसे की समस्या है, They have family problem. परिवार समस्या है, They have education problem. शिक्षा की समस्या है, Employment problem. नौकरी की समस्या है, They have a health problem. स्वास्थ्य की समस्या है, Mental health. मानसिक Bodily स्वास्थ्य, health. शारीरिक स्वास्थ्य, Mental, bodily health of the children, the wife, the husband, mother, father. शरीर और मन की स्वास्थ्य, बच्चे, पत्नी और परिवार, माता पिता। Everybody is so obsessed and disturbed by all of these problems, sufferings in our life. सभी कोई बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा चिंतित है इन सारे दुख में, कष्ट में, परिस्थिति से अपने जीवन में। For the mother, they love the child crying and talking. They think it's like a amrit, you know. माँ के लिए इस तरह बच्चे का चिल्लाना या रोना माँ को बहुत अच्छा लगता है, उनको ऐसा सुनने में अमृत जैसा लगता है। They think it's like so sweet. उनको सुनने में बहुत मधुर लगता है ये आवाज़। But for many of us, it's like so painful, you know. बाकी लोगों के, कुछ लोगों के लिए बहुत दर्दनाक होता है। They're not comfortable. वो सुविधाजनक स्थिति में They're नहीं not है, happy. They're वो not खुश peaceful. नहीं, वो शांत नहीं है, So they're crying. इसलिए वो रो रहे हैं। We're also crying. We're also complaining. हम भी रो रहे हैं, हम भी शिकायत कर रहे हैं, We're also disturbed. हम भी परेशान हैं, We're just like big children हम बस बड़े बच्चे हैं, and always complaining, हमेशा शिकायत करते हैं, grumbling, complaining, शिकायत करते हैं और दोष निकालते हैं, suffering. दुख भोगते हैं। Always we're like a victim. We're being victimized somehow or other. हम सोचते हैं हमेशा हमें प्रताड़ित किया जा रहा है, We're being mistreated unfairly. हमें गलत तरीके से हमें ट्रीट किया जा रहा है, व्यवहार किया जा रहा है, We're not being appreciated. हमारी सराहना नहीं की जा रही है, People are not understanding our exceptional, special nature. लोग हमारा विशेष स्वभाव को समझ नहीं पा रहे हैं। This is also very painful. ये भी बहुत दर्दनाक है। Am I describing properly? क्या मैं सही तरीके से बता रहा हूँ? If you honestly analyze it. क्या आप ईमानदारी से अगर आकलन करें?
So this is not Vaikuntha. Vaikuntha means no stress, no anxiety. तो ये वैकुंठ नहीं है, वैकुंठ का मतलब कोई चिंता नहीं, कोई तनाव नहीं। Prabhupada said this world, this temporary miserable world, is filled with anxiety. बात बताते हैं ये जो अस्थायी भौतिक जगत है ये पूरी तरह से कष्टों से भरा है। In many places, Prabhupada said this is the material disease, this anxiety, fear and anxiety. कई जगहों पर श्रील प्रभुपाद ने बताया है ये भौतिक रोग है, ये चिंता, ये भय। My Gurudev used to laugh, if Krishna wanted this place to be permanent and blissful, he would have made it that way. मेरे गुरुदेव हंस के कहा करते थे अगर कृष्ण चाहते इस जगत को स्थायी और सुखमय बनाने का तो वो ऐसा कर सकते थे। He made it to be temporary and miserable. उन्होंने बनाया इसको अस्थायी और कष्टों से भरा। And what are we doing? We're busy trying to make it permanent and blissful. और हम क्या कर रहे हैं? हम पूरी तरह व्यस्त हैं इसको स्थायी बनाने के लिए और आनंदपूर्ण बनाने के लिए। So how well is that going? तो कितना अच्छा ये जा रहा है? And how long will we stay? और कितना लंबा हम यहाँ रह पाएंगे? Who can stay? Who can say? कौन रह सकता है? कौन बता सकता है? So in the Vedic culture, it's supposed to be this life is a preparation for the next life. वैदिक सभ्यता के आधार पे ये जीवन अगले जीवन की तैयारी के लिए है। How many people, even in India, where you ask them, are you preparing for your next life? कितने लोग जो भारत में हैं उनको भी आप सवाल पूछिए कि वो अगले जन्म की तैयारी कर रहे हैं? Or you're just worrying about this life? और आप बस सिर्फ इस जीवन की चिंता कर रहे हैं? Are you just hankering to gain in this life? क्या आप बस उत्कंठा किए हैं कि इस जीवन में क्या प्राप्त करेंगे? Or are we just lamenting because we cannot achieve it? या फिर हम शोक कर रहे हैं उस बात का कि हम उसको प्राप्त नहीं कर पा रहे? Or we got it and we lost it? या हमें मिला और हमने खो दिया? So material life is hankering for that which you cannot have, that you don't have, or lamenting that you lost it or never achieved it. तो भौतिक जीवन का यही मतलब है, आप उस चीज़ की उत्कंठा करते रहते हैं, या तो आप उसके पीछे उत्कंठा कर रहे हैं या आपको मिल नहीं पा रहा है, या फिर आप उस चीज़ के लिए शोक कर रहे हैं जो आपको मिला, आपने उसको खो दिया। So hankering into the future, lamenting from the past. तो भविष्य के लिए हम हमेशा उत्कंठा कर रहे हैं और भूत के लिए हम हमेशा शोक कर रहे हैं। Means not being peaceful and happy in the present. यानी कि हम वर्तमान में ना तो सुख में है ना शांति में। Not being satisfied. ना संतुष्ट हैं। Are we realizing this? क्या हम इसका साक्षात्कार कर पा रहे हैं? Are we intelligent, sensitive enough to realize it? क्या हम बुद्धिमान हैं उसको महसूस कर पाने के लिए? Because we must understand first how is it designed and what is it designed for. क्योंकि पहले हमें ये समझना होगा ये रचना कैसे बनाई गई है और किसके लिए बनाई गई है। Anytime you want to fix something, you have to find out first what was it designed for, what is it designed to do, isn't it? कुछ भी चीज़ को अगर आप ठीक करना चाहते हैं, पहले आपको ये समझना होगा ये किस चीज़ के लिए बनाई गई है, कैसे बनाया गया है। So if it's designed to be temporary and miserable, how are you going to fix that? अगर इसका निर्माण ही किया गया है अस्थायी और दुखमय परिस्थिति के आधार पे, तो आप इसको कैसे ठीक करेंगे? Is this going to be like this whole time? क्या ये पूरे समय तक चलेगा ऐसा? It's just like it's like a symphony, you know. While we're talking about suffering, this baby's just crying and disturbed, right? So it's like a nice song. तो ये अच्छा पीछे गाना चल रहा है कि जैसे हम यहाँ दुख और कष्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो पीछे गाना भी चल रहा है साथ में। It's making it very practical. तो ये बहुत प्रैक्टिकल लग रहा है सब। You know when they're telling some narration, there's some background noise to emphasize that point, isn't it? कभी कुछ लोग किसी चीज़ के बारे में व्याख्या की जाती है और बैकग्राउंड में कुछ म्यूजिक चलाया जाता है तो ताकि पता चल सके किस चीज़ के बारे में बात की। It feels like that, you know. वैसा ही लग रहा है सुनने। Only thing we need is somebody to just cut some marble. You know? Yeah, just some cutting of the marble. That's the only thing that's missing on top of that. You know? अभी यहाँ पे एक ही चीज़ मिस हो रहा है कि कोई मार्बल काटने वाली मशीन लेकर मार्बल काटना शुरू कर दे तो वो एक साउंड एक और आएगा। Just to make everything nice and peaceful and happy, you know. ताकि सब कुछ शांत और सब कुछ सुखमय लगे आसपास। Just so your mind can be really free and peaceful and happy. Yeah, very nice. Yeah. Exactly. ताकि आपका मन जो है पूरी तरह मुक्त हो, शांत और सुखमय हो सके ऐसा। You see, so all Sadhguru Vaishnavas, Krishna,
all devotees, they're explaining what is the suffering and reality of material world before they even try to preach to anybody. तो सबसे पहले साधु गुरु वैष्णव ये दुखमय परिस्थिति के बारे में व्याख्या करना शुरू करते हैं। इसे अपना प्रचार शुरू करने से पहले वो इस दुखमय परिस्थिति का व्याख्या करना शुरू करते हैं। Very nice. Now we just did like cyclone. हमें बस एक कोई चक्रवात चाहिए। It's like everything's in harmony, you know. सब कुछ ऐसे पूरी तरह एक लय में चल रहा है। I thought we were going to come and have like a light discussion, you know. I'm like sweating already, you know. मुझे लगा आके थोड़ा हल्का फुल्का बातचीत करेंगे। पहले ही मुझे पसीना छूटने लगा। I didn't expect to be saying all of this, you know. मैंने उम्मीद नहीं की थी मैं ये सब बातें कहूँगा। But somehow this is what's coming out, you know. किसी तरह ये चीजें बाहर आ रही हैं। Because I'm reminded of our verse from yesterday. क्योंकि मुझे याद आ रहा है हमारे कल का श्लोक जिस पे हम चर्चा कर रहे थे। Where who are those persons who get the mercy and blessing from the Lord and the Lord's devotees? कौन है वो व्यक्ति जिनको कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होती है भगवान और भगवान के भक्तों से? Who gets the mercy? किनको कृपा प्राप्त होती? Who gets the causeless mercy and the compassion of the Lord? किसको अहेतु की कृपा और करुणा प्राप्त होती है भगवान की? Of those people who are suffering, they know it and they're trying to escape from that situation. वो लोग जो दुख भोग रहे हैं उसको जानते हैं वो दुख भोग रहे हैं और वो चाहते हैं इससे बाहर निकलना उनके लिए। So it's available for everybody. तो ये उपलब्ध है सभी के लिए। But Prabhupada said, if you're just still arguing that you're happy, then this is not for you. लेकिन प्रभुपाद बताते हैं अगर आप बस बहस करते रहेंगे कि ये आपके लिए नहीं आप सुखी हैं तो ये आपके लिए नहीं है। Prabhupada said, there's no use in trying to argue over whether you're happy or you're not happy. प्रभुपाद बताते हैं इस बात पे बहस करने का कोई मतलब नहीं बनता कि आप खुश हैं या नहीं। Nobody's happy here. कोई भी यहाँ खुश नहीं है। Whether we realize it or not is another topic. हम अनुभव करें या नहीं ये अलग विषय है। But those who are smart, who are conscious, sensitive, they'll realize, oh no, this is very much anxiety place. जो बुद्धिमान हैं जो चिंतन कर रहे हैं इसका वो समझ पाएंगे ये असल में सुखमय जगह नहीं है। This is the madhouse, not just prison house, but madhouse. Everyone is going mad. ये बस कैदगार नहीं है पागल खाना है सब लोग बस पागल हो रहे हैं यहाँ। No peace, Prabhupada said, means no happiness. प्रभुपाद बताते हैं कोई शांति नहीं इसका मतलब कोई सुख नहीं। So if you're happy with all of that, then this information is not for you. अगर आप इन सब चीज़ों से खुश हैं तो ये जानकारी आपके लिए नहीं है। But if you want to escape that and get out of that suffering condition and change that situation, then this compassion and intelligence and knowledge from the Vedic philosophy that's required for you. तो अगर आप इस बात का साक्षात्कार कर पा रहे हैं कि आप दुख में परिस्थिति में हैं आप इससे बाहर आना चाहते हैं तो ये वैदिक ग्रंथों का ज्ञान आपके लिए है। And that person, Prabhupada says, that person is considered jnani, wise man. और उस व्यक्ति को प्रभुपाद बताते हैं बुद्धिमान ज्ञानी व्यक्ति कहा जाता है। It says that if we have human form of life and we're not asking these questions and trying to solve these problems, then we're not even in a human consciousness. ऐसा बताते हैं अगर हमारा मनुष्य शरीर मिला है और अगर हम ये सवाल नहीं कर रहे हैं और इन समस्याओं का समाधान करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब हम मनुष्य की चेतना में भी नहीं आए हैं। Prabhupada says it's like two-legged animal, cats, dogs, camels, asses, like this. प्रभुपाद बताते हैं दो पैरों पर चलने वाले जानवर हैं कुत्ते हैं बिल्ली हैं ऊँट हैं और गधे के जैसे हैं। Their consciousness is so low they cannot perceive their suffering condition. उनकी चेतना इतनी नीची होती है कि वो अपने दुखमय परिस्थिति का अनुभव नहीं कर पाते हैं। And because they cannot perceive that, there's no question of asking, how do I solve it? How do I get out of it? अगर वो इस दुख का महसूस नहीं कर पाते तो इसीलिए कोई सवाल ही नहीं उठता कि कैसे उससे बाहर निकले कैसे इसका समाधान करें। So Prabhupada said, if you don't think you have a problem, you don't need a guru. प्रभुपाद बताते हैं अगर आप सोचते हैं आपके पास कोई समस्या नहीं है तो आपको गुरु की कोई ज़रूरत नहीं। You don't need this instruction from Krishna, from Sadhu Guru Vaishnava, from Shastra. आपको कोई ज़रूरत नहीं है इन निर्देशों की कृष्ण की साधु गुरु वैष्णव और शास्त्रों की। Because this information is how to solve the problem, how to escape out of this hellish situation.
क्योंकि ये जानकारी है कैसे अपनी समस्याओं का समाधान करें और कैसे इस नरकीय परिस्थिति से बाहर निकलें। And just making mental adjustments or moving here or there or changing your job or doing all of these material adjustments, that's not going to solve it. और किसी तरह से किसी मानसिक संतुलन बनाकर या अपनी जगह को बदलकर एक जगह से दूसरे जगह जाके जॉब बदलकर काम बदलकर ये सारी चीज़ों को ये सारा जो व्यवस्था बनाने की कोशिश कर रहे हैं संतुलन, इससे इस समस्या का समाधान नहीं होगा। And it says the root of the problem is uncontrolled mind and senses, कहा जाता है समस्या है अनियंत्रित मन और इंद्रिय, which are leading us towards sinful activities, जो हमें लेकर जा रहा है पापमय गतिविधि की तरफ, forcing us to commit sinful activities, मजबूर कर रहा है हमें पाप करने के लिए, and then suffering all of the sinful reactions. और दुख भोग रहे हैं उन सारे पाप के फलों का। So all the yoga systems, psychiatry, psychologists, all of that is how do you deal with this disturbed mind and senses. तो सारी योग की प्रक्रिया, सारा मनोवैज्ञानिक तरीका जो भी है, ये इसी बात के लिए है कि कैसे इस अनियंत्रित मन और इंद्रियों को काबू में रखा जाए। Because without peace of mind, there's no question of being happy. क्योंकि बिना नियंत्रित मन के सुख का कोई सवाल नहीं उठता। And if we don't want to realize that and take the Vedic, option, then I always ask the question, what do you like better instead, depression or anxiety? और अगर आप इन सारी चीज़ों को समझ के वेदों के ज्ञान का फ़ायदा नहीं उठाना चाहते, तो मैं अक्सर लोगों से सवाल पूछता हूँ, आप क्या ज़्यादा पसंद करते हैं, हताश होना कि चिंता में रहना? If you don't want peace and happiness by being Krishna conscious, then all you're left with is either anxiety or depression. अगर आप शांति आनंद प्राप्त नहीं कर सकते हैं कृष्णा भावनामृत तरीके से, तो एक ही दो ही मात्र चीज़ आपके पास रह जाती है, या तो आप चिंता में रहेंगे या पूरी तरह हताश रहेंगे। So when you're getting sick of the anxiety, then you fall into depression. तो आप जब पूरी तरह परेशान हो जाते हैं चिंता से, तो आप हताश हो जाते हैं। And when you're sick of being depressed, then you need some activity, then you need anxiety. जब आप पूरी तरह से हताश हो जाते हैं और उससे ऊब जाते हैं, तो फिर आप फिर से चिंता में आ जाते हैं। So that's the way an intelligent person will live their life. क्या कोई बुद्धिमान व्यक्ति ऐसा जीवन जीना चाहेगा? Doesn't matter if you're rich or poor, फर्क नहीं पड़ता आप अमीर हो या गरीब हो, educated or not educated, पढ़े लिखे या अनपढ़, or married or not married, शादीशुदा या अविवाहित, or you're from this country or that country. इस देश से या दूसरे देश से, The whole thing is a prison house. सभी जगह ये कारागार है। All threefold miseries are for every living entity who's here in this prison house. तीन तरह के भौतिक कष्ट सभी जीवात्मा को मिल रहे हैं जो यहाँ पे रहते हैं। Are we realizing it? क्या हम इसका अनुभव कर पा रहे हैं? Are we conscious of it? क्या हम इसके बारे में चेतना है हमारी? Is it tasty? क्या स्वादिष्ट है ये? Is it nice to be in complete anxiety and depressed and disturbed? Is this a nice way to live? क्या ये बहुत अच्छा तरीका है जीवन जीने का, पूरी तरह चिंता में रहना, पूरी तरह निराश हताश रहना? क्या ये अच्छा तरीका है? That's our choice. ये हमारा चुनाव है। So if we don't accept Krishna consciousness, then the only thing is Maya. अगर हम कृष्ण भावनामृत का चुनाव नहीं करते, तो एकमात्र चीज़ रह जाती है वो है माया। We have independence, हमारे पास आज़ादी है, but it's minute लेकिन independence. ये बहुत अल्प स्वतंत्रता है। We can choose to either choose Krishna or Maya. हम चुनाव कर सकते हैं, हम कृष्णा का चुनाव करें या माया का। We can serve Krishna or Maya. या तो हम कृष्णा की सेवा करेंगे या माया की। So Krishna is watching, which one do you want? तो कृष्णा देख रहे हैं आप क्या चाहते हैं, And he's simply fulfilling those desires. और वो सरलता से उन इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं। Then we have to see, are we satisfied with that result? तो फिर हमें देखना होगा क्या हम संतुष्ट हैं उन फलों से? Are you getting warmed up? क्या थोड़ा गर्मी मिल रही है आपको? The baby's not crying as much? अब बच्चा उतना ज़्यादा नहीं रो रहा है? Maybe baby's getting more purified? हो सकता है बच्चा थोड़ा शुद्ध हो रहा है, Feeling more peaceful by this Harikatha, Krishna-katha? थोड़ा शांति में महसूस कर रहा है इस हरि कथा से, कृष्ण कथा से। Or Krishna is just helping us by making that baby pacified? That's also possible. या हो सकता है कृष्ण हमारी मदद कर रहे हैं ताकि उस बच्चे को थोड़ा शांत रखने के लिए, ये हो सकता है, ये भी संभव है। Questions? कोई सवाल? Points? Complaints? कोई शिकायत? I'm always talking. What about you? मैं हमेशा पूछता हूँ आपके बारे में क्या? Manik, is it? मानिक। Malik? So what are you trying to figure out? आप क्या पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं?
can we change the destiny, or once is the destiny pre-decided, and can it be changed for the demons who are not following Krishna? Like, is destiny pre-decided? What is it? He's asking if Talk loud. he is asking if the destiny is it's destined, whatever somebody's fate is, and can the destiny of I the can't pick up the Indian accent, right? And I'm asking another person who has the same accent, you know? I told you it takes me like 1 or 2 weeks to finally like start to catch it again, you know? I haven't been here for 1 year. मैंने आपसे कहा कि मुझे थोड़ा समय लगेगा, 2-3 हफ्ते भारतीय उच्चारण अंग्रेजी का थोड़ा समझने में थोड़ा समय लगेगा. Actually, what is destiny? He's from England. They think they have perfect English, so let's see what it is. ये इंग्लैंड से ये सोचते हैं इनका इंग्लिश सबसे बेस्ट है, तो देखते हैं इनका कैसा है. They criticize people from America, you know, we don't speak proper English, you know. ये अमेरिका के लोगों में दोष निकालते हैं कि वो अच्छा अंग्रेजी नहीं बोलते हैं. As soon as America beat them in the revolution, from that point they're complaining, you know. जब से अमेरिका ने इनको पीट डाला है, तब से ये लोग अमेरिका पे हमेशा दोष निकालते हैं. Still bothers them to this day, you know. आज तक इस बात की ये लोग चिंता करते हैं. You had some farmers, you know, some farmers just take on the whole British military and defeated them, you know. It's embarrassing, you know. अमेरिका के कुछ खेती करने वाले लोगों ने पूरे ब्रिटिश आर्मी को हरा के रख दिया था. ये अभी तक आज तक इनके लिए तो बहुत दर्द देता है ये बात. Or even worse, you have Gandhi, he's just spinning some cloth, you know. या उससे बुरा गांधी यहाँ पे बस एक चक्का घुमा के इनको बाहर निकाल दिया. So their false ego cannot tolerate it, you know. तो इनका अहंकार इसको झेल नहीं पाता इस बात को. Very painful for them. बहुत दर्दनाक है उनके लिए. But anyway, we still need his help, so we have to be a little humble, you know. लेकिन फिर भी हमें इनकी मदद चाहिए, थोड़ा हम विनम्र होंगे. So he's asking, is fate, is it predetermined? Like somebody's fate, they're predetermined what will happen in their life? Is it already predestined? Krishna has a plan for everybody. तो प्रभु का सवाल ये है कि अगर हमारे तकदीर पहले से तय की गई रहती है या नहीं. तो गुरुदेव बताते हैं कृष्णा ने इसकी रचना की है. Now it's up to us whether we're going to cooperate with his plan or not. तो अब ये हमारे ऊपर निर्भर करता है हम कृष्णा के योजना में सहयोग करना चाहते हैं या नहीं. That's only thing. यही एकमात्र चीज़ है. Are we going to be foolish, क्या हम मूर्ख बनेंगे rebellious, या हम विद्रोह करेंगे, rascals, हम बदमाश बनेंगे, non-cooperative? अगर हम सहयोग नहीं करेंगे. You know, that's up to us. Yeah, If we would just, Prabhupada says, you could be Krishna conscious in one moment if you would just cooperate with Krishna. प्रभुपाद ने कहा है आप कृष्ण भावना में एक क्षण में हो सकते हैं अगर आप कृष्ण का सहयोग करें. But because of this stupid mind लेकिन इस बेवकूफ मन की वजह से and senses, और इंद्रिय we're easily misunderstanding and misdirected. हम बहुत ही आसानी से गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं, गलत दिशा में चले जाते So हैं. Krishna's instruction is very simple and straightforward. तो कृष्ण के निर्देश बहुत ही सरल, बहुत सीधा है. But because we're deaf and we can't hear him, we're not hearing him, then we're choosing to forget him. और क्योंकि हम बहरे हैं, हम उनको सुन नहीं पा रहे हैं, हम उनको सुनना नहीं चाहते हैं और हम उनको भूलना चाहते हैं. Then Krishna says, then I'll also make you forget me. तो कृष्ण कहते हैं मैं मुझे भुलवा दूंगा. If you want to remember me, I'll give you intelligence, understanding how to come to me. अगर आप मुझे याद करना चाहते हैं, मैं आपको बुद्धि दूंगा, मैं आपको बताऊंगा कैसे मुझ तक आना है. If you want to forget me and try to act independently, I'll give you big false ego and you can forget your soul and the supreme soul and try to enjoy separately. तो अगर आप मुझे भूलना चाहते हैं, स्वतंत्र रूप से कार्य करना चाहते हैं, आनंद भोगना चाहते हैं स्वतंत्र तरीके से, तो मैं आपको शक्ति दूंगा, बुद्धि दूंगा भूलने के लिए. मैं आपको बहुत बड़ा अहंकार दूंगा, तो आप भूल जाएंगे आत्मा को, परमात्मा को, ये सब चीज़ें भूल जाएंगे आप. So Prabhupada said the only thing a soul can do is desire. तो बताते हैं एकमात्र कार्य जो आत्मा कर सकती है वो इच्छा करना. So is our desire to cooperate with Krishna's plan and destiny for us? तो क्या हमारा इच्छा है कृष्ण हमारे लिए क्या
हमारे लिए गंतव्य क्या तय किया है, हम उसका पालन करना चाहते हैं, Or we're going to remain foolish and rebellious and refuse to listen and join in acting independently or separately. या हम बेवकूफ़ बनेंगे, विद्रोह करेंगे कृष्ण के योजना के आधार की तरफ और हम स्वतंत्र रूप से हमेशा कार्य करेंगे. Then that path will be very rocky, difficult path. तो फिर ये रास्ता बहुत कटीला और बहुत मुश्किल पथ होगा. Krishna says this lust and anger and greed, this is the royal road to hell. कृष्ण बताते हैं ये काम, क्रोध और लोभ नरक जाने का सही रास्ता है. So if we're maintaining and cultivating that demoniac qualities, greedy and lusty and angry, this is royal road to hell, not the road to heaven. अगर हम इस तरह के गुण प्रकट कर रहे हैं, इस तरह के गुण बनाए रखे हुए हैं, काम, क्रोध और लोभ, तो ये नरक जाने का सही रास्ता है. So choice is up to us. तो चुनाव हमें करना है. And what we desire, Krishna is, whether spiritually or materially, Krishna is fulfilling those desires. और जो हमारी इच्छा है या भौतिक इच्छा हो या आध्यात्मिक इच्छा, कृष्ण उसको देखते हैं, कृष्ण उसको पूरा करते हैं. Does that help you? क्या इसने आपकी मदद की? So ultimate destination is to reach Krishna Lok for everyone. So that is the real destiny, meaning of the destiny. Is it? He says the ultimate goal of life is to reach Krishna Loka. Is to surrender and serve Krishna with loving devotion. That's the reason we were created. प्रभु का सवाल है, इसका प्रभु का ये बात कहना चाहते हैं कि इसका मतलब जीवन का लक्ष्य, गंतव्य स्थान ये है कि अंत में कृष्ण के पास पहुंचना, कृष्ण लोक के पास पहुंचना. So गुरुदेव ने उत्तर दिया कि असल में जीवन का उद्देश्य है कृष्ण को शरणागत करना, कृष्ण की सेवा करना और कृष्ण के प्रति प्रेम विकसित करना. So this material body is made to how to purify the human body, how to purify and elevate the consciousness to re-establish this lost relationship with Krishna. तो मनुष्य जीवन मिला है अपनी चेतना को शुद्ध करके कृष्ण के साथ अपने संबंध को पुनः स्थापित करना. The other species cannot purify, elevate their consciousness. दूसरे योनि के जीव अपने चेतना को शुद्ध नहीं कर सकते, ऊपर नहीं उठा सकते. It's fixed. ये स्थिर रहता है. But in human form, this form is very unique form because you can purify and elevate your consciousness, or you can contaminate and degrade your consciousness. लेकिन ये मनुष्य जीवन बहुत विशेष है क्योंकि इसमें आप अपनी चेतना को शुद्ध कर सकते हैं और ऊपर उठा सकते हैं, और साथ ही आप अपनी चेतना को दूषित भी कर सकते हैं और नीचे भी गिरा सकते हैं. So how are we living our life? How are we trying to purify and elevate our consciousness? तो हम अपना जीवन कैसा जी रहे हैं? हम इसको शुद्ध कर रहे हैं और ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे हैं चेतना को. And if we're not doing that, then automatically we're just contaminating and degrading consciousness. तो अगर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से हम अपनी चेतना को गंदा कर रहे हैं और इसको नीचे गिरा रहे हैं. So we're misusing human form of life if we're doing like this. तो हम गलत इस्तेमाल कर रहे हैं अपने मनुष्य जीवन का. And there's a special responsibility for Indian body human beings. और ये विशेष उत्तरदायित्व है विशेष करके जो भारतीय शरीर में है. Because you took such a birth, you have that responsibility to perfect yourself and then help the rest of humanity how to solve the problems in their life by practicing spiritual life. और ये भारतीय लोगों का ज़्यादा बड़ा उत्तरदायित्व है कि वो पहले अपने जीवन को शुद्ध करें, अपने आप सिद्धि प्राप्त करें और आध्यात्मिक जीवन अभ्यास करें, फिर अन्य दूसरे लोगों की भी मदद करें आध्यात्मिक जीवन में आने के लिए, उनको आध्यात्मिक जीवन में प्रयास करने के लिए. It says to those who much is given, much is expected of them. ऐसा कहा जाता है जिसको जितना ज़्यादा दिया गया है उससे उतना ज़्यादा उम्मीद रखा जाता है. So will you fulfill your Vedic birth and your Vedic transcendental Sanatan Dharma destiny? तो क्या आप उसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं जो आपका वैदिक जन्म हुआ और दिव्य सनातन धर्म में आपका जन्म हुआ? Or will we continue to just chase after money and technology and sense gratification and try to remove ourselves from Vedic culture? या फिर हम हमेशा प्रयास करते रहेंगे पैसे के पीछे भागना, इंद्रिय तृप्ति प्राप्त करना और हमेशा दूर जाते रहना हमारी वैदिक संस्कृति, वैदिक सभ्यता से? That choice is ours, isn't it? ये चुनाव हमें करना है. So Krishna is the witness and the judge. तो कृष्ण है गवाह, वो न्याय करेंगे. I'm not your judge. मैं आपका न्याय नहीं करूँगा. Krishna is the judge. कृष्ण न्याय करेंगे.
Krishna knows what's in our heart. He knows what is our desire, whether material or spiritual. कृष्ण हमारे हृदय में है, वो जानते हैं हमारी क्या इच्छा है, भौतिक या आध्यात्मिक, And He'll fulfill those desires accordingly और वो इच्छाओं को पूरा करेंगे उसके आधार पे, and teach us lesson in the process. और हमें प्रक्रिया में कुछ पाठ सिखाएंगे, Sometimes very painful lesson कुछ दर्दनाक सबक सीखना पड़ेगा, because we're refusing to catch the point. क्योंकि हम बात को समझने से इनकार कर रहे हैं, We're being rebellious, हम विद्रोही हो रहे हैं, non-cooperative. सहयोग नहीं कर रहे हैं। Does that help you? क्या इसने आपकी मदद की? Is there a question there? कोई सवाल है वहाँ? No? Okay. Yes? Where is the Mataji who asked about the military? She's here? वो माता जी कहाँ हैं जिन्होंने मेरे You're all right? सवाल पूछा था? आप ठीक हैं? You're doing okay? आप ठीक कर रहे हैं? She's good? I'm doing fine. Thanks for asking. Okay. Fantastic. That's good. बहुत अच्छी बात है। Hare Krishna Guru Maharaj. So, my mind always goes around the whole world. This is the worst enemy. I just want to know what is the best way to focus my uncontrollable mind in the lotus feet of Govinda. You gotta get off the mental airplane. माता जी का सवाल है कि मेरा मन जो है हमेशा पूरी दुनिया में घूमता रहता है और मतलब तो मैं कैसे अपने मन को जो है इस गोविंद के चरण कमलों में केंद्रित कर सकती हूँ। तो गुरुदेव ने उत्तर दिया कि आपको अपने मन के जो विमान पे आप उड़ते रहते हो उससे नीचे उतरना है। She has to stop buying this ticket, you know. उनको ये टिकट खरीदना बंद करना होगा। Put your feet on the ground, you know. अपना जमीन पैरों पे रखिए। Aren't you getting tired flying around the world? अब थक नहीं जाती है दुनिया में ऐसे उड़ते उड़ते? Especially during COVID time? विशेष करके ये कोविड के समय में। So don't fly around. तो ऐसे उड़ते मत रहिए। Try to pray to Gaunitai that you can hear the instruction and be present in the room. तो आप गौरनिता से प्रार्थना कीजिए कि आप उन निर्देशों को सुन सकें जो आपको वर्तमान में इस कमरे के अंदर मिल रही है, उसको सुन पाएं आप। Because your body's here, but your mind might not be here. क्योंकि आपका शरीर यहाँ हो सकता है लेकिन आपका मन यहाँ नहीं है। It's in Italy and, you know, ये इटली में, Europe and America and Assam. यूरोप, अमेरिका, असम में, असम। I'm so attached. इतने आसक्त हैं। The motherland, मातृभूमि है, place where we're born, जगह जहाँ हमारा जन्म हुआ है, the family, परिवार है, bodily relations, शरीर के संबंधी हैं, society, friendship and love. समाज, दोस्त और प्रेम। So we're distracted, heavily distracted. हम बहुत बुरी तरह से भटके हुए हैं। So this katha doesn't enter in so nicely. इसलिए ये कथा बहुत अच्छे से प्रवेश नहीं कर पा रही है। What about my mother? What about my wife, my daughter, my son? मेरी माँ का क्या, मेरा पत्नी का क्या, मेरे बेटी का क्या, मेरे बेटे का क्या, My husband, मेरे पति का, bodily relations. शरीर और शारीरिक संबंध, Too much attachment. बहुत ज़्यादा आसक्ति है। New York, New York, New York, New York. Now it's like Rikers Island, you know, has now become New York. Seriously. The prison house, right? It used to just be in the prison, but they just expanded it, so the whole island is just like one big prison, you know. जैसे एक कारागार होता है तो अभी न्यूयॉर्क जो ऐसा है ये एक्सपेंड हो चुका है, पूरा न्यूयॉर्क ही कारागार बना हुआ है। And still we're like, New York, New York. और फिर ये हमसे न्यूयॉर्क करते रहते हैं। So even when holy Dham, we're like Assam, Assam. यहाँ तक कि धाम में भी और आसाम I wonder what's happening in Assam. पता नहीं आसाम में क्या हो रहा है। So the body's here,
but our attention is not here. लेकिन हमारा ध्यान नहीं है यहाँ. What's happening at the office? What's happening with the family? What's happening with all the life, right? हमारे Our bank balance. हमारे ऑफिस में क्या हो रहा है, हमारे परिवार में क्या हो रहा है, हमारे जीवन में क्या हो रहा है. Yeah, should I buy crypto? क्या मुझे क्रिप्टो खरीदना चाहिए? Should I buy precious metals? क्या हमें महंगे Should I buy some land? या मुझे कुछ जमीन खरीदनी चाहिए, संपत्ति खरीदनी चाहिए. This money will be like, you just like light fires with that paper money. ये आज के जो पैसा, ये कागज का जो पैसा, इससे आप आग भी लगा सकते हैं इसको. The economy is going to crash. अर्थव्यवस्था गिरने वाली है. World War III. तीसरा विश्व युद्ध आने वाला है. Bombs are going to fly. बम गिरने वाले हैं. So it's very difficult to listen to this information. इसलिए बहुत मुश्किल है इस जानकारी को सुन पाना. A song. He wants to be the emperor of a song. ये आसाम के सम्राट बनना चाहते हैं. Seriously. इससे गंभीरता से. He's acting like he's simple brahmachari, you know. ये दिखावा कर रहे हैं कि ये सरल ब्रह्मचारी हैं. He's calculating how to be the emperor of a song. ये गणना कर रहे हैं कैसे आसाम का सम्राट बनना है. How to be established there. कैसे वहाँ स्थापना करनी है. I hope I'm not offending you. मुझे उम्मीद है मैं आपके प्रति कोई अपराध नहीं कर रहा. So, I'm sorry. Oh, you were flying around in the plane. आप प्लेन में उड़ रहे थे. Okay, so now you're not going to buy another ticket. तो अब आप और टिकट नहीं खरीदने वाली. You're too tired flying around. आप बहुत थक गए हैं उड़ते उड़ते. So now you're just going to be peaceful. तो अब आप बस शांत रहिए. Practice simple devotional life. कुछ भक्ति करने का प्रयास कीजिए. Hear some Hari Katha, Krishna Katha, take nice prasadam. हरि कथा कृष्ण कथा श्रवण कीजिए, प्रसाद अच्छा लीजिए. Try to learn how to be peaceful. सीखिए कैसे शांतमय होना है. Some of our life was so much chaos and confusion, it's almost difficult to understand what do you do being peaceful and happy. कुछ लोगों का जीवन तो इतना उथल पुथल और इतने अस्त व्यस्त रहता है कि वो समझ नहीं पाते कि इतने जगह जीवन में अगर शांति आ जाए तो उसका करेंगे क्या. Like what does that mean? उसका मतलब क्या है शांति. So, question? सवाल. So, is there any way to get rid of this worldly attachments? Like we say, so many attachments and that. So how we can get rid of this? Just like Arjuna, you have to just kill your family. You know? माधव जी का सवाल है, तो मैं अपने ये शारीरिक जो संबंधी हैं उनसे भौतिक आसक्ति इससे कैसे मुक्त हो सकती हैं. तो गुरुदेव ने उत्तर दिया, अपने सारे परिवार वालों को खत्म कर दो जैसे अर्जुन ने कर लिया. That is shocking answer, isn't it? ये थोड़ा चौंकाने वाला उत्तर हुआ नहीं. People, oh, Murali Krishna Swami, he's telling everybody to kill their family, you know. Oh, मुरली कृष्ण स्वामी सभी लोग कह रहे हैं अपने परिवार वालों को खत्म कर दो. It's the easiest way to get rid of family attachment. ये सबसे आसान तरीका है पारिवारिक आसक्ति से मुक्त होने का. We have to become more and more attached to Krishna, Krishna's devotees, process and results of devotional service, then automatically this will become less important. हमें जो है जितना ज़्यादा आसक्ति बढ़ानी होगी कृष्णा से, कृष्णा के चरण कमलों से, कृष्णा के भक्तों से और भक्ति की प्रक्रिया से और भक्ति करने के द्वारा जो हमें फल प्राप्त होता है उससे, तो अपने आप ये जो भौतिक आसक्ति है धीरे धीरे कम होने लगेगी. To give up asat sangha, we need sat sangha, sadhu sangha. असत्संग त्याग करने के लिए हमें सत्संग करना होगा, साधु संग. We're social beings. We're created to be social. हम सामाजिक प्राणी हैं, हमारा निर्माण ही हुआ है सामाजिक बने रहने के लिए. You cannot kill this desire for association. आप इस इच्छा को मार नहीं सकते हैं कि संग के बिना रह सकें आप. It's just will it be spiritual association or materialistic association? सवाल ये है कि आप आध्यात्मिक संग करेंगे कि भौतिक संग करेंगे. And that will influence our desires either spiritually or materially. और वो हमारी इच्छाओं पर प्रभाव भी डालेगा आध्यात्मिक और भौतिक रूप से.
So it says the process of devotional service, automatically you'll develop transcendental knowledge and realization. ऐसे बताया जाता है इस भक्ति की प्रक्रिया से स्वाभाविक रूप से आप दिव्य ज्ञान और दिव्य ज्ञान विकसित करेंगे. And you become materially renounced and more detached. There will not be so strong attachment. आप भौतिक चीज़ों से आप त्याग उत्पन्न करने लगेंगे, आप उनसे ज़्यादा आसक्ति आपकी खत्म होने लगेगी. We just have to put something better in place. आपको कुछ बेहतर चीज़ डालनी है उसी जगह पे. Krishna says by getting higher taste you can let go of lower taste. कृष्ण बताते हैं अगर आपको ऊंचा स्वाद मिलेगा तो आप नीचे स्वाद को छोड़ सकते हैं. Material bodily relations, materialistic activity means a lower taste. भौतिक शारीरिक जो संबंधी है ये सब जो है नीचे का स्वाद है. But that's only taste we know. और लेकिन यही एकमात्र स्वाद जो हम जानते हैं. So how do you let go of it if you don't have higher spiritual taste? कैसे आप उसको त्याग कर पाएंगे अगर आपको कोई ऊंचा आध्यात्मिक स्वाद नहीं मिल पा रहा? Prabhupada said hardly anybody wants to let go of it. प्रभुपाद बोलते हैं मुश्किल से ही कोई इसको छोड़ना चाहता है नीचे के स्वाद को. Because too much attached. कि बहुत ज़्यादा आसक्ति. Like ropes and anchors in the mud. लंगर कीचड़ में फंसा हुआ है ऐसा. This is not a small problem. इस कोई छोटी समस्या नहीं है. If we cooperate with Guru Sadhu Shastra and process of Krishna consciousness, it's much quicker. और अगर हम सहयोग करेंगे गुरु साधु शास्त्र से और इस प्रक्रिया से तो ये बहुत तीव्र गति से होगा. But because we're not cooperating or we're doing go slow, हम या तो सहयोग नहीं कर रहे हैं या तो हम धीमी गति से बढ़ रहे हैं. we're dragging the feet. हम अपने जो है पैर खींच रहे हैं. Right? Sometimes the children, when you want to go somewhere, they don't want to go. कभी-कभी छोटे बच्चे हैं वो कहीं जाना नहीं चाहते हैं, आप उनको जबरदस्ती ले जाना चाहते हैं. And then they act like their body is like a lead. और फिर वो अपना शरीर इस तरह से करते हैं जैसे कि वो कोई लंबी कड़ी लकड़ी है ऐसा कुछ. He's a brahmachari, so he doesn't quite understand, you know. ये ब्रह्मचारी है इसलिए ये बच्चों वाली चीजें जानता है. But they get like they put their feet into the ground because they don't want to move. लेकिन वो बच्चे अपने पैर जो है जमीन में धंसा देते हैं क्योंकि वो वहाँ से जाना नहीं चाहते हैं. I have 3 children, so I also know. मेरे भी 3 बच्चे थे इसलिए मैं जानता हूँ. So sometimes you have to drag them तो कभी-कभी उनको खींचना पड़ता है. until they get the point. जब तक वो बात ना समझ जाए. Isn't it? ऐसा है. Pick them up, drag them. उठाइए, खींचिए. So sometimes we need to be dragged तो कभी-कभी हमें घसीटना पड़ता है. because we're not so cooperative. क्योंकि हम सहयोग नहीं कर रहे हैं. Or Maya has to put the heavy lashes. या माया कड़ा प्रहार करती है हमारे ऊपर. That's also very motivating. वो भी बहुत प्रेरणा देगा. Like ass, जैसे getting hit with a heavy stick. गधे को जो मोटे-मोटे डंडे मारने पड़ते हैं. And then we'll move along. तब हम आगे बढ़ेंगे. Something. थोड़ा. Okay, yeah. Hare Krishna. So one devotee is asking me, where does the ISKCON devotees want us to practice Krishna consciousness? Although there is a lot of training, there is no proper atmosphere. There's no atmosphere, but there's what? A lot of training. How can there be training if there's no atmosphere? तो सवाल ये पूछा जाता है कि कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करने के लिए ISKCON के भक्त क्या चाहते हैं, कहाँ जाएं, क्योंकि वहाँ पे शिक्षण तो है लेकिन वैसा वातावरण नहीं मिलता है, सही प्रशिक्षण. तो गुरुदेव बताते हैं अगर शिक्षण है, प्रशिक्षण मिल रहा है तो वातावरण कैसे वहाँ नहीं है. If they don't know how to create a nice atmosphere, then they're not qualified to train you. अगर उनको पता नहीं है कैसा वातावरण बनाना है तो इसका मतलब उनको प्रशिक्षण देना ही नहीं आता है. So what is the meaning of your training if you could not create a proper spiritual atmosphere? तो इस प्रशिक्षण का क्या मतलब है अगर आप एक सही आध्यात्मिक परिवेश नहीं बना सकते आसपास? Then you're just training them how not to live in a proper spiritual atmosphere. What kind of training is this? तो फिर अब उनको प्रशिक्षण ये दिया जा रहा है किस तरह जो है बिना आध्यात्मिक परिवेश में रहना, ये किस तरह का प्रशिक्षण है. So who can make a nice spiritual atmosphere
and inspire us to surrender and serve, then they can help train you. तो जो एक अच्छा परिवेश बना सकते हैं, आध्यात्मिक परिवेश, ताकि हम कृष्ण को शरणागत करने के लिए आगे बढ़ सकें, तो वो वहाँ पे हमें सही प्रशिक्षण मिल रहा है, वो हमें सही प्रशिक्षण दे सकते हैं. Right? So if you want to really train someone and you can't create a nice spiritual atmosphere, then why will you expect them to be successful in that training? तो अगर आप किसी को प्रशिक्षण देना चाहते हैं और अगर आप ऐसा आध्यात्मिक परिवेश आसपास नहीं बना सकते हैं जहां वो सफल हो सके आध्यात्मिक जीवन में, तो आपके प्रशिक्षण का क्या मतलब है? It's like if you want to plant the seeds but the land is barren, then how do you put the seeds there? ऐसा है कि अगर आप बीज डालना चाहते हैं लेकिन जो ज़मीन है वो बंजर ज़मीन है, तो वहाँ पे कैसे पौधे उगेंगे? So what is the meaning of your being a gardener तो आपके माली or होने a का farmer? या आपके एक श्रमिक या एक कृषक होने का क्या मतलब है? माली होने का क्या If you can't create an environment where the seeds can be planted and then grown, जहाँ आप ऐसा माहौल वातावरण नहीं बना सकते जहाँ बीज को डाला जा सके और बीज बढ़ सके ऊपर, so you have to be able to do it all. तो आपको ये सब कुछ कर पाने के योग्य होना होगा. Prepare the ground, जमीन को तैयार have a करना nice होगा, seed, अच्छा बीज डालना होगा, plant the seed, water the seed, बीज को बोना होगा, उस पर पानी डालना protect the होगा, creeper, और जो उगेगा उसको रक्षण करने के लिए उसको बचाना भी होगा. bring sunshine, bring water. जो सूर्य की रोशनी चाहिए होगी उसको पानी So चाहिए होगा. hearing and chanting is like a water and sunshine. ये श्रवण कीर्तन है, ये उसको पानी डालना और सूर्य की Nice रोशनी डालना. prasadam. अच्छा प्रसाद. And then protect the creeper while they're still not strong. और उस लता को रक्षा करना जब तक कि वो मजबूत ना हो जाए. And nourish it till they become strong. और उसको पोषण देना जब तक कि वो पूरी तरह से मजबूत ना हो जाए. So all of that means you'll be expert gardener. Srila Rupa Goswami talking about that. तो Chaitanya Charitamrita. चैतन्य चरितामृत में इसके बारे में बताया गया है कि कैसे उसको ये सारा चीज़ देना है, ये सारा ट्रेनिंग देना है. So what is the meaning of this training but no atmosphere? लेकिन तो फिर इस प्रशिक्षण का क्या मतलब जहाँ ऐसा परिवेश नहीं बनाया जा सकता? Can't be like this. ऐसा नहीं हो सकता. Did I catch the point? क्या मैंने बात को पकड़ा सही तरीके से? Was that the whole question? क्या ये पूरा सवाल था? He was also saying at the end that standards have become low and no proper checks and balances. Standards have become low and there's no checks and balances. No checks and balances? Yeah. Sounds like a corrupt government when there's no checks and balances, isn't it? तो बता रहे हैं कि जो है अव्यवस्था हो चुकी है और संतुलन नहीं है. तो गुरुदेव उत्तर दे रहे हैं, तो सुनने में ऐसा लगता है जैसे भ्रष्ट सरकार जब होती है तो ऐसी अव्यवस्था होती है, तो ऐसा ही है. But if someone's doing pure devotional service, do you need checks and balances? तो अगर कोई शुद्ध भक्ति कर रहा है तो ये checks and balances. If you're doing pure devotional service, do you need to check and balance it and see if it's real? अगर आप शुद्ध भक्ति कर रहे हैं तो आपको क्या ये देखने की ज़रूरत है कि ये सत्य है या नहीं है? That means you're not trusting it, इसका मतलब आप विश्वास नहीं कर रहे हैं. isn't it? ऐसा है या नहीं? That means it's not pure. इसका मतलब ये शुद्ध नहीं है. So Prabhupada said purity is the force. तो श्रील प्रभुपाद बताते हैं शुद्धता में बल है. Without the purity, the execution cannot manifest. बिना शुद्धता के उसका परिणाम नहीं मिल सकता. The standard cannot be maintained. जो उसकी व्यवस्था को जो है बनाया नहीं रखा जा सकता. Then you need bridge preaching. तो फिर आपको ये ब्रिज प्रीचिंग करना पड़ता है. Then you introduce psychology and hatha yoga and demigod worship. Then you have to do all of these other tricks. तो फिर आपको ये मनोविज्ञान और ये हठ योगा, देवी देवताओं की पूजा, ये सब दूसरा छल करना पड़ता है आपको. Because you can't give a real thing. क्योंकि असल चीज़ नहीं दे पा रहे हैं. This is very politically incorrect to speak like this. You realize that, right? आप इस बात का साक्षात्कार अनुभव कर पा रहे हैं. मैं जिस तरह से कह रहा हूँ ये राजनीतिक रूप से सही नहीं है. The institution will not appreciate this. संस्था इसकी सराहना नहीं करेगा. But we didn't come to join an institution.
लेकिन हम यहाँ किसी संस्था से जुड़ने के लिए नहीं आए। We came here to become Krishna conscious. हम यहाँ कृष्ण भावनामृत होने के लिए आए हैं। Instead, they become GBC conscious. उसके बजाय बन रहे हैं जीबीसी चेतना वाले, Instead of Krishna. कृष्णा की जगह। Now you have to sign oath of allegiance to the GBC. अभी आपको एक साइन करना होता है, हस्ताक्षर करने होते हैं, किसी तरह की शपथ लेनी होती है वहाँ जाने के लिए इस वहाँ। Right? To the Communist Party, to the Nazi Party. जैसे कोई You have to sign, put some blood there. जैसे कोई समाजवादी पार्टी होती है, नाज़ी पार्टी होती है, वहाँ पे आपको अपना रक्त काट के हस्ताक्षर करना होता है, ऐसा। So you can motivate by love and devotion and purity, तो आप प्रेरणा दे सकते हैं प्रेम से, भक्ति से और अपनी शुद्धता से, or by force and intimidation and laws. या फिर ज़बरदस्ती जोर डालकर जबरन किसी को मजबूर किया जा सकता है। Anybody else? कोई और? Yeah. Assam. What's happening in Assam? असम में क्या हो रहा है? Such a nice place, nice people, बहुत अच्छे लोग हैं, simple. सरल। You're supposed to be more simple than them. आपको उनसे ज़्यादा सरल होना चाहिए उन लोगों से। Hare Krishna. Hare Krishna. Gurudev, you told before, without Guru Bhakti, how can you develop Krishna Bhakti? And now you told that everything judge and witness is Krishna. Because without Guru Bhakti means Two mercies required. तो प्रभु का सवाल है कि गुरु ने पहले बताया है कि बिना गुरु भक्ति के कृष्ण भक्ति कैसे प्राप्त की जा सकती है, लेकिन अभी आप बता रहे हैं कि कृष्ण हमारे न्याय करता है और कृष्ण हमारे गवाह हैं, वो हमारे न्याय करता है। तो गुरुदेव ने उत्तर दिया, गुरुदेव ने बताया दो कृपा की जरूरत है, गुरु की कृपा और कृष्ण की कृपा। He's making me work a little extra hard tonight, you know. ये मुझे थोड़ा और कड़ी मेहनत करा रहा है आज रात में। I have to push a little harder, you know. और मुझे जोर देना पड़ रहा है थोड़ा। So mercy of Krishna, mercy of Guru. गुरु की कृपा और कृष्ण की कृपा। By the mercy of Krishna, one gets a bona fide Guru. कृष्ण की कृपा से किसी को प्रमाणिक गुरु प्राप्त होते हैं। By the mercy of bona fide Guru, he helps you how to get Krishna. और प्रमाणिक गुरु की कृपा से वो आपकी मदद करते हैं कैसे कृष्ण को प्राप्त करना। Both required. दोनों की आवश्यकता है। Guru knows Krishna's intention for us. गुरु जानते हैं कृष्ण हमसे क्या चाहते हैं। And Prabhupada said then when the Guru give instruction, you should think, oh, Krishna has told me this thing through my Guru. तो प्रभुपाद बताते हैं जब हमें गुरु कुछ निर्देश देते हैं तो हमें ये समझना चाहिए कृष्ण मुझे निर्देश दे रहे हैं गुरु के माध्यम से। So I should do this for Guru and Krishna's pleasure. तो मुझे ये करना चाहिए गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। That is my Sanatan Dharma. ये मेरा सनातन धर्म है। That's a real Dharma, ये असल धर्म है, not Kaitava Dharma. कोई ठगने वाला धर्म नहीं। Everybody in India, they love to throw this word Dharma around, isn't it? भारत में सभी लोग ये शब्द फेंकते रहते हैं इधर उधर धर्म। Right? They're going smoking marijuana and doing all drugs, and they say, "This is my Dharma." This is my Dharma. लोग गांजा पीते हैं और सभी तरह का नशा करते हैं और बाद में कहते हैं ये मेरा धर्म है। You can use this word for anything, isn't it? यहाँ पे इस शब्द का इस्तेमाल हर जगह करते रहते हैं। It sounds good. Oh, that's his Dharma. सुनने में अच्छा लगता है, ओ इसका धर्म है ये। Even it's nonsense. It's like that's his Dharma. You have to respect his Dharma, you know. यहाँ तक कि पूरा बकवास कर रहा है, फिर भी कहेंगे ये इसका धर्म है, इसका सम्मान करना चाहिए। It's like a modern psychology. You know, they say, you know, that's your truth, right? So everyone has their own truth, and that should all be respected equally. You know, that's your truth, right? जैसे आधुनिक मनोविज्ञान है उसमें ऐसा कहते हैं ये आपका सत्य है, ये मेरा सत्य है और सभी का सत्य को सम्मान करना है।
So everyone's truth should be respected except Krishna's truth, right? तो सभी के सत्य का सम्मान किया जाना चाहिए सिवाय कृष्णा के सत्य के। So, you get the point? आप बात समझे? But Two mercy required. दो कृपा चाहिए। how I get mercy? Deserve it. तो वो बोल रहे कैसे मुझे कृपा प्राप्त हुई? गुरुदेव ने बताया उसके लायक बनो। My Gurudev said, you don't just sit on the chair and say, oh Gurudev, kripa karo, oh, shower mercy on me. मेरे गुरुदेव कहा करते थे वैसा नहीं कुर्सी में बैठे रहेंगे और रोते रहेंगे और कहते रहेंगे गुरुदेव कृपा करिए मेरे पे कुछ कृपा कीजिए। You have to do something. आपको कुछ करना होगा। It said God helps those who help themselves. ऐसी कहावत है भगवान उनकी मदद करते हैं जो स्वयं अपनी मदद करते हैं। So if we sincerely try to follow instruction of Guru and Krishna and want to please them, then you deserve mercy. तो अगर हम गंभीरता से गुरु कृष्ण के निर्देश का पालन कर रहे हैं उनको प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं तो हम कृपा के लायक हैं। It's not a mystery, it's not confusing, it's not complicated. ये कोई रहस्य नहीं है, ये कोई इतना जटिल चीज़ नहीं है, ये कोई भ्रमित करने वाला चीज़ नहीं है, बहुत सरल चीज़ है। Prabhupada said, secret of success in spiritual life is make the instructions of your spiritual master, which comes from Krishna, your life and your soul. प्रभुपाद बताते हैं आध्यात्मिक जीवन की सफलता का रहस्य है अपने आध्यात्मिक गुरु के द्वारा निर्देश को पालन करना जो कि अंततः कृष्ण से आ रही है, ये आपकी सफलता का रहस्य है। Then automatically you get mercy of Guru and Krishna. तो अपने आप ही आपको गुरु कृष्ण की कृपा प्राप्त होगी। You can overcome Maya, आप माया के पार जा सकते हैं, get out of Maya, माया से बाहर निकल सकते हैं, ultimately go back to Godhead. और अंततः भगवत धाम वापस जा सकते हैं। So what instructions are we making our life and our soul? That's the only question. तो किन निर्देश को हम अपने जीवन का सार बना रहे हैं, यही एकमात्र सवाल है। What the mother says, what the father says, जो माँ कह रहे हैं, जो पिता कह रहे हैं उसको, what the government says, सरकार जो कह रही है वो, what the teacher जो says, शिक्षक कह रहे हैं, what my employer says. मेरे जो एम्प्लॉय हैं वो कह रहे हैं, कर्मचारी। I see in India there's so many people, there are not enough jobs. मैंने देखा है भारत में इतने सारे लोग हैं लेकिन नौकरी पर्याप्त नहीं है यहाँ, Like good jobs. असल नौकरी। So I went to, when I was in Bhubaneswar, I go to some place, right? There's like hundreds, thousands of people waiting. I said, why are they all waiting here? They said, oh, they're going for a job interview. मैंने देखा कई बार उड़ीसा में बहुत सारे हजारों सैकड़ों लोग जो है कहीं खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं, तो मैंने पूछा ये इतने इंतजार क्यों कर रहे हैं? पता चला ये कि नौकरी के लिए जा रहे हैं। And I said, well, how many people are they hiring? They said, just one. मैं पूछता हूँ कितने लोगों को ये चुनने वाले हैं? कहते हैं बस एक आदमी चुना जाएगा। You get 500 boys, trying to get one post. मतलब 500 लड़के हैं और एक पद के लिए 500 लड़के हैं। To get that job, you have to sell your soul, isn't it? उस नौकरी को पाने के लिए आपको अपनी आत्मा तक बेचनी पड़ेगी। Be prepared. 16 hours a day, 7 days a week, for working for peanuts, तैयार हो जाइए 16 घंटे हफ्ते में 7 दिन काम करने के लिए, बस बादाम जैसा खाने के लिए। Huh? Peanuts. Yeah, they're taking advantage. और फायदा उठा रहे हैं वो लोग इसका। So this puts everybody in a hellish condition. तो सभी नरक जैसे स्थिति में हैं। And you practically have to sell your soul to this company, to these employer. और देखा जाए तो आपको अपनी आत्मा तक बेचनी पड़ेगी इन लोगों के लिए, इन कर्मचारियों के लिए काम करने के लिए। You just become like a slave, basically. आप एक का जो है उनके दास बन जाएंगे एक तरह से। For life. पूरे जीवन भर। Isn't it? है कि नहीं? Is this true? Has anything really changed here in India? क्या कुछ बदल गया है भारत में अब तक? Getting better? क्या बेहतर हो रहा है? Is it getting easier? क्या और आसान हो रहा है? I don't think so. मुझे नहीं लगता। Anybody else? कोई और? Yeah? Hare Krishna. You're listening very nicely today. Thank you. I appreciate it. आप बहुत अच्छे से सुन रहे हैं आज, मैं उसकी बहुत सराहना करता हूँ। Guruji, my question is like, I want my children to become doctor or engineer like this. So is this material attachment? As I want my children to become doctor or engineer, is this the material attachment?
How is it? I want my children to become doctor or engineer. Is this material attachment? An engineer or a doctor? Yeah. For Krishna? Yeah, definitely. You want them to be doctor and engineer for Krishna's pleasure? That's spiritual. प्रभु का सवाल है मैं चाहता हूँ मेरे बेटे बेटियाँ डॉक्टर और इंजीनियर बने, तो क्या ये एक तरह की भौतिक आसक्ति है? तो गुरुदेव ने बताया आप किसके लिए चाहते हैं, ये कृष्ण के प्रसन्नता के लिए चाहते हैं कि वो डॉक्टर इंजीनियर बने या किसके लिए? तो अगर कृष्ण के लिए चाहते हैं तो ये आध्यात्मिक है. But the question is, does Krishna want those souls to become engineer and doctor for Krishna's pleasure? Are you sure of that? लेकिन सवाल ये है कि कृष्ण क्या चाहते हैं उन जीवात्माओं के लिए कि वो डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हैं या नहीं? कृष्ण उनसे क्या चाहते हैं, या कृष्ण उस बात से प्रसन्न होंगे या नहीं? Is that what Krishna wants for their souls? क्या कृष्ण उन जीवात्मा के लिए वो चाहते हैं, Or is that what you want for their souls? या वो आप चाहते हैं उनके लिए वो? That's the question. ये सवाल है. So are they supposed to follow your instruction and just please you, or should they surrender and serve Krishna? तो वो आपके निर्देश का पालन करें, आपको शरणागत करें, आपको प्रसन्न करें, या कृष्ण को शरणागत करें, कृष्ण के निर्देश का पालन करें और कृष्ण को प्रसन्न करें? And won't Krishna, if they need to be married person and have some occupation, won't Krishna make a proper arrangement for them to get married and have proper occupation? Are you not trusting Krishna? तो अगर कृष्ण चाहते हैं कि वो विवाह करें, वो किसी तरह के पैसे में लगें, तो आपको नहीं, कृष्णा पे आपको ये भरोसा नहीं है कि कृष्ण इस सारी व्यवस्था को करेंगे, उनको इस तरह के पैसे में लगाएंगे, उनके विवाह की ये सारी व्यवस्था कृष्ण करेंगे? आपको भरोसा है कृष्ण पे? Somehow in India there's this misconception, whoever takes to, spiritual life or Krishna consciousness, you have to shave your head and become a sannyasi. Man, woman, child, right? इसी तरह मैंने भारत में देखा, ये भारत में अवधारणा है कि जो भी आध्यात्मिक जीवन में आता है उसको अपना सर मुड़ाना है, सन्यासी बनना है, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, सबको यही करना होता है. Right? Krishna's pretty practical person, कृष्णा बहुत व्यवहारिक व्यक्ति हैं. He knows everybody's nature. वो सभी का स्वभाव जानते हैं. Right? There's brahmachari, grihastha, vanaprastha, sannyas. गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास. Brahmana, Kshatriya, Vaishya, Shudra. ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र. So according to their nature, that they'll be engaged. तो उनके स्वभाव के आधार पे उनको लगाया जाएगा. And Guru Krishna will bring them step by step, gradually through that system. That's Varnashram system, Krishna system. तो गुरु कृष्ण धीरे धीरे उनको इस व्यवस्था में लेकर आएंगे. ये वर्णाश्रम व्यवस्था है. Oh, my son has become a Hare Krishna devotee. He's gonna leave his family and shave his head and move in the ashram in the village. I'll never see him again. ओ मेरा बेटा जो है हरे कृष्ण करेगा, अपना सर मुड़ा लेगा, अपने परिवार को छोड़ देगा और आश्रम में कहीं दूर जाके भूल जाएगा हमें और कहीं गांव में जाके रहेगा. You have to, go through brahmachari, then grihastha means you're married, you need a job, whatever your qualification is, whatever your nature is, naturally, that's the job, service that you're going to do automatically. तो स्वाभाविक रूप से ब्रह्मचर्य का आश्रम है पहले, उसके बाद आप गृहस्थ का मतलब आपको कुछ पैसा करना होगा, कुछ धन अर्जन करने के लिए, और स्वाभाविक रूप से आपका जो स्वभाव है उसके आधार पे आपको नियुक्त किया जाएगा उससे. Even Krishna told Arjuna, you're Kshatriya. यहाँ तक कि कृष्ण ने कहा अर्जुन से, तुम क्षत्रिय हो. Even if you don't follow my instruction, your nature will force you to fight. यहाँ तक कि आप मेरा निर्देश ना भी पालन करें, लेकिन आपका स्वभाव ही ऐसा है कि आप स्वाभाविक रूप से युद्ध करेंगे. So whatever svabhava or God-given nature that we have, automatically we're going to gravitate and move towards that, just by nature's arrangement. तो जो भी हमें भगवान के द्वारा जो स्वभाव प्राप्त हुआ है स्वाभाविक रूप से, प्राकृतिक रूप से, तो प्रकृति की व्यवस्था या भगवान की व्यवस्था के आधार पे हम अपने आप ही उसकी तरफ बढ़ेंगे. Prabhupada, he was criticizing this Vietnam War, that they were forcing all of the young people to join and fight in the war. प्रभुपाद इस वियतनाम युद्ध की बहुत निंदा कर रहे थे क्योंकि बहुत सारे जवान युवाओं को उस युद्ध में जबरदस्ती लड़ने के लिए भेजा जा रहा था. So he's saying, you have Shudras and you have, artists and musicians and, Vaishyas, and you're forcing them to become Kshatriyas and kill in the war in the jungles in Vietnam. This is a madness. ये सब पागलपन है. आप जो है, आपके पास शूद्र हैं, आपके पास
संगीतकार हैं, कलाकार हैं, वैश्य हैं, इन लोगों को आप जो है क्षत्रिय की तरह युद्ध में लड़ने के लिए भेज रहे हैं वियतनाम में जंगल में, ये पागलपन है, उनका स्वभाव नहीं है। And he wants to draw some painting, you know, and then he's got a machine gun fighting in the jungle, you know, it's ridiculous, you तो know. उसको बस कुछ तस्वीर बनाना आता है, कुछ चित्र बनाना आता है, उसके हाथ में मशीन गन दे दिया है अपने जंगल में जाके गोलियां चलाने के लिए। So they don't know how to engage the people. तो वो जानते नहीं है लोगों को कैसे लगाना है काम So पे। whatever their nature is, तो जो भी उनका स्वभाव है they're automatically going to gravitate towards that. तो वो अपने आप ही उसके तरफ बढ़ जाएंगे। But in India, you know, even the parents sometimes they have to be a doctor or they have to be an engineer. You know, maybe that person's a musician or an artist or wants to work, you know, on the farm. Right? No, you have to be an engineer and you have to be a doctor. You know. तो कई बार भारत में देखा है किसी व्यक्ति का स्वाभाविक गुण होता है किसी कलाकारी का या किसी तरह का संगीत का, लेकिन भारत में बहुत ज़बरदस्ती जोर दिया जाता है कि उनको डॉक्टर ही बनाना है, उनको इंजीनियर ही बनाना है। That's why so many children are killing themselves in India. इसलिए बहुत सारे बच्चे अपने आत्महत्या कर रहे हैं भारत में। Committing suicide. आत्महत्या कर रहे हैं। Because so much pressure from the family and from the society. क्योंकि बहुत ज़्यादा दबाव है परिवार से और समाज से उनके ऊपर। It's unnatural. अस्वाभाविक है। So whatever is natural and according to one's God-given talent and God-given ability, automatically they'll move in that direction. जो भी भगवान के द्वारा दिया हुआ किसी का स्वभाव है, स्वाभाविक रूप से वो उसकी तरफ आगे बढ़ेगा। And then Krishna says, just do it for me, as an act of devotional service. और कृष्ण कहते हैं वो मेरे लिए करो, ये है भक्ति का एक मार्ग है। Then it's Daivi Varnashram. तो इसको दैवी वर्णाश्रम कहते हैं। It's spiritual Varnashram. आध्यात्मिक वर्णाश्रम। Then it's perfect. तो ये सही है। Or gradual elevation. धीरे-धीरे उन्नति होगी आगे। All right? ठीक है। Thank you very much. Hare Krishna. I'm amazed when I see young people and they say, you know, I want to be a fireman or I want to be a engineer. I'm amazed by this, how like some young child has such a strong, passionate, strong desire to do something or be somebody. I was never like that. मैं कई बार आश्चर्यचकित हो जाता हूँ कुछ जवान लोगों को देख के, वो कहते हैं नहीं मैं बहुत पैशन में, वो कहते हैं कि मैं जो है एक आग में काम करने वाला व्यक्ति बनना चाहता हूँ, फायरमैन बनना चाहता हूँ। इस तरह से उनका बहुत ज़्यादा इच्छा होता है, तीव्र इच्छा होता है। मेरे पास कभी ऐसी इच्छा नहीं थी। I was always trying to figure out what am I supposed to do? What is the purpose of my life, you know? मैं हमेशा ये पता लगाने का प्रयास कर रहा था मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। I tried so many different things. मैंने बहुत सारी चीज़ें करने का प्रयास किया। So many different occupations. बहुत सारे अलग-अलग पेशे। Different degrees, different schools, different occupations, everything. I was searching, trying to figure out what am I supposed to do. अलग डिग्री, अलग स्कूल, अलग पेशा, सब कुछ मैं करने का प्रयास किया। मैं पता लगाने का प्रयास कर रहा था मैं किस चीज़ के लिए बना हूँ। From the childhood, he's thinking he wants to be the emperor of Assam. When he was a baby in the crib, he was thinking like this. ये बचपन से जब ये छोटे से बच्चे थे तब से ये सोचते थे मैं आसाम का सम्राट बनूंगा। If I can't do it in Bengal, I'll do it in Assam. अगर बंगाल में नहीं कर पाया कम से कम आसाम में करूंगा। He was thinking like this. ऐसा सोचता था। He's thinking maybe it's easier in Assam. सोचते थे आसाम में थोड़ा ज़्यादा आसान होगा। I don't know. हो सकता है। Can you handle it? क्या आप झेल सकते हैं इसको? Yeah. You came here for the medicine, right? आप यहाँ औषधि के लिए आए हैं। Sometimes it's a little pinching. कभी-कभी थोड़ा चोट But that's all right. You'll not die. आप मरेंगे नहीं, चिंता मत कीजिए। I'm also learning. You're learning? आप सीख रहे हैं? Ready, he's ready. Ready. He's ready and he's learning. ये तैयार है और ये सीख रहा है। Hare Krishna. So, yeah? So one person is asking, how can a disciple know if his spiritual master is pleased? Is what? If his spiritual master is pleased,
how can a person know if his Gurudev is pleased with him or not? When he's far away from the spiritual master. You get that? When he's far away? When a person is not next to the spiritual master, how can he know if the spiritual master is pleased, right? So सवाल ये है कि अगर कोई व्यक्ति कोई शिष्य अपने आध्यात्मिक गुरु से बहुत दूर है तो उसे कैसे पता चलेगा उनके आध्यात्मिक गुरु उनसे खुश हैं या नहीं? Srila Prabhupada explains that the instructions of the spiritual master, which come from Krishna, those instructions are non-different from the spiritual master, श्रील प्रभुपाद not बताते हैं separate. श्रील प्रभुपाद बताते हैं आध्यात्मिक गुरु के द्वारा प्राप्त किया गया निर्देश जो अंततः कृष्ण से मिलता है वो आध्यात्मिक गुरु से अभिन्न है. So if we make those instructions our life and soul, and we try our best to surrender and follow those instructions, then automatically we'll understand that the Guru is happy with us. तो अगर हम अपना श्रेष्ठ प्रयास करेंगे उन निर्देशों का पालन करने के लिए, उनको शरणागत करने के लिए और उनको सही तरीके से पालन करने के लिए, तो अपने आप ही हम समझ पाएंगे कि गुरु उनसे प्रसन्न है या नहीं. But without understanding and following the instruction, then how we can think that Guru and Krishna will be pleased with us? और बिना उनके निर्देशों को समझे बिना उसका पालन किए बिना कैसे हम समझ पाएंगे कि गुरु हमसे प्रसन्न है या नहीं. And if we become more peaceful and happy and joyful, and if we're happy, that means Guru Krishna is happy with us. और अगर हम आनंद का अनुभूति कर पा रहे हैं, शांति का, और हम आनंदित हो पा रहे हैं, तो हम समझ पाएंगे कि गुरु कृष्ण भी हमसे प्रसन्न हो रहे हैं. It's like if you're starving and you haven't eaten for days and somebody gives you a big plate of Mahaprasadam and you start eating the prasadam. Does anyone have to tell you that, oh, this feels really good? ऐसा है कि आप कई दिनों से भूखे हों और आपको फिर जो है खाने का महाप्रसाद का एक बहुत बड़ा सा प्लेट मिलता है और आप जब धीरे धीरे खाना शुरू करते हैं तो किसी को आपको बताना पड़ता है कि आप भरा हुआ महसूस कर रहे हैं या नहीं, या स्वयं आपको पता चलता है. Does anyone have to tell you, oh, you're getting nourished, you're feeling strong, you're feeling happy as you're eating? Does someone have to explain to you what that feels like? क्या आपको किसी और को आके आपको समझाना पड़ता है, आपको बताना पड़ता है कि वो आपको और शरीर को पोषण मिल रहा है, आपको शक्ति मिल रही है, आपको और ऊर्जा मिल रही है, आपको स्वतः पता चलता है. It's automatic. अपने आप होता है, स्वतः. And if we don't follow and we're being rebellious or foolish or lazy or stupid, then no peace, no happiness. और अगर हम सही तरीके से पालन नहीं करते हैं, हम विद्रोही होते हैं, हम मूर्खता करते हैं, हम या तो हम आलसी बनते हैं, और हम सही तरीके से पालन नहीं करते हैं, तो हमें जब उसका फल मिलता है हम सुखी नहीं होते हैं, हम शांत नहीं हो पाते हैं. We surrender to Guru Krishna means surrender to Rishikesh, master of the mind and the senses. गुरु कृष्ण को शरणागत करने का मतलब ऋषिकेश को शरणागत करना जो मन इंद्रिय के स्वामी हैं. Then mind and senses become peaceful, then we become controlled and we become happy. जब हमारा मन इंद्रिय नियंत्रण में आ जाता है तब हम शांतमय सुखमय हो पाते हैं. If our mind and senses are not peaceful and controlled, that means we're not surrendering properly to Guru and Krishna. अगर हमारा मन इंद्रिय नियंत्रित नहीं है और शांत नहीं है, इसका मतलब हम गुरु कृष्ण को शरणागत नहीं कर रहे हैं. Then there will be no peace and happiness. इसका मतलब कोई शांति कोई सुख नहीं. Okay, does that answer the question? क्या इसने सवाल का जवाब दिया? Any last thing? कोई आखिरी चीज? Yeah. Whenever I'm on long flights, Krishna always puts me next to a screaming baby. जब भी मैं कोई लंबे यात्रा पे जाता हूँ विमान में, तो कृष्ण मुझे ऐसे लोगों के साथ आसपास रखते हैं जहाँ कोई बच्चा हमेशा रोता रहता है. It's like some special mercy. I can almost expect it, you know. ये लगता है मुझे विशेष कुछ कृपा मिलता है, हमेशा मुझे इसका उम्मीद रहता है कुछ होने वाला है. Now I'm so nervous. I get in the plane. I'm looking. Where's the screaming baby? You know. मैं बहुत नर्वस रहता हूँ. मैं जब भी विमान के अंदर जाता हूँ, मैं हमेशा देखता हूँ किधर कोई चिल्लाता रोता हुआ बच्चा है. And then I start looking at my seat number, you know, and see, and it's like almost right next to that screaming baby every time, you know. और मैं अपना सीट का नंबर देखता हूँ, चेक करता हूँ, और फिर मैं देख पाता हूँ कि ये मेरा सीट जो है उसी बच्चे के बगल में जो पूरा रो रहा है.
And it's just like reminder, like you want to go through this again, you know, here it is, you know. मुझे पुनः स्मरण दिया जाता है कि क्या आप इससे फिर से ये सब चीज़ें दोबारा गुजरना चाहते हैं? In case you forget, this is what's waiting for you. अगर आप किसी तरह भूल जाए तो ये आपको याद दिलाने के लिए सब चीज़ें। I'm like, no, I got the point, okay, you know, I'll just keep preaching, you know. नहीं, मैं बात समझ गया, मैं प्रचार करते रहूँगा। I don't want to go through it again, you know. मैं इन सब चीज़ों से दोबारा गुजरना No नहीं चाहता। offense to anybody, but you know, I went through all of these things. किसी के प्रति कोई अपराध नहीं, लेकिन मैं इनसे दोबारा इन चीज़ों से दोबारा गुजरना नहीं चाहता। So, yeah, sure. Hare Krishna Gurudev, Ashutosh. thank you very much for wonderful class. Yes, day before yesterday's lecture, you were speaking about right of hearing. So actually, I did not understand what is the right of hearing and which kind of disciple get it, and how do we understand if we have got the right of hearing or not. प्रभु का सवाल है, कुछ दिनों पहले आज आपने बहुत ही अच्छा क्लास दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ दिनों पहले आपने एक क्लास में कहा था श्रवण का अधिकार। तो श्रवण का अधिकार किस तरह के शिष्य को मिलता है और उसको पाने के लिए क्या योग्यता है, और अगर हमें श्रवण का अधिकार प्राप्त होता है तो हम कैसे समझ पाएंगे कि हमें श्रवण का अधिकार प्राप्त हुआ है। So if all of your questions are being answered आपके अगर सारे सवालों का आपको जवाब मिलता by है Krishna, Guru, Sadhu and Shastra, कृष्ण गुरु साधु शास्त्र systematically, व्यवस्थित रूप से, and it's convincing you, और ये आपको अगर आश्वस्त कर रहा है, and all of your doubts are being destroyed by getting this transcendental knowledge, और आपके सारे संदेह नष्ट हो रहे हैं इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने के बाद, and you're becoming more peaceful, more strong, more determined in your understanding what you have to do in your service to Krishna. और आप और ज़्यादा शांत और ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा दृढ़ निश्चय होते जा रहे हैं, आश्वस्त होते जा रहे हैं इस दिशा में कि कृष्ण आपसे क्या चाहते हैं। That's a very good effect of proper hearing in proper association. ये एक बहुत ही अच्छा प्रभाव आप देख सकते हैं सही श्रवण और सही संग में श्रवण। So it's like if you have like steel traps over your ears, right? Nothing can enter inside. जैसे आपके कानों की तरफ स्टील के पर्दे लगा दिए हों और आपके कानों के अंदर कुछ भी घुस नहीं रहा हो। It's very like confusing and muffled, and it's you're not understanding anything. बहुत भ्रमित और बहुत ही उल्टा पुल्टा सब कुछ हो, आप कुछ समझ नहीं पाए चीज़ें। So somebody comes and just lifts it up and removes it, and then it enters inside of you. Now you have the right of hearing and understanding, right? अगर ये कोई स्टील के पर्दे आपके कानों से हटा दे और सारी चीज़ें आपके कानों के अंदर घुसने लगे, तो यानी कि अब आपको सही समझ प्राप्त हो रही है। So Sanjay in Bhagavad Gita, he said, because my spiritual master, he purified my mind and my senses, in that pure consciousness, I was able to directly hear Krishna speaking. तो संजय बताते हैं भगवद गीता में, मेरे आध्यात्मिक गुरु की कृपा से उन्होंने मेरे मन और इंद्रियों को शुद्ध कर दिया, जिसके वजह से मैं कृष्ण को सीधे सीधे श्रवण कर पाया कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल। So that's the definition of perfect hearing, means to directly hear Krishna speaking. ये परिभाषा है सही श्रवण की, जिसका जब आप कृष्ण को सीधे सीधे श्रवण कर पाते हैं। If you really want to know the definition of perfect hearing, अगर आप असल में जानना चाहते हैं परिभाषा सही श्रवण की, so mercy of the spiritual master to purify the mind and senses, where we can hear Krishna's direct instruction, that is perfect hearing from perfect source. तो गुरु कृष्ण की कृपा से अगर हम श्रवण कर पाते हैं सीधे सीधे कृष्ण को, इसका मतलब हम सही श्रवण कर रहे हैं। So if we are very in front of the spiritual master, we're very humble, तो आध्यात्मिक गुरु के सामने अगर हम बहुत विनम्र हैं and we're very submissive, और हम बहुत शरणागत हैं, and very eager, greedy to hear and learn, और बहुत उत्सुक हैं, बहुत लोभी हैं सीखने के लिए, and very appreciative, not challenging, और बहुत हम सराहना कर रहे हैं, हम चुनौती नहीं दे and रहे हैं, respecting the subject matter and respecting the topic, respecting the personality of our spiritual master. और हमारे आध्यात्मिक गुरु का सम्मान कर रहे हैं, और जिस विषय पे चर्चा हो रही है हम उसका सम्मान कर रहे हैं। So all of this mood and mentality
an eagerness and inquisitiveness to learn, then the teacher, the preacher will be pleased with you and shower mercy and blessing onto you. तो इस तरह की मनोभाव, इस तरह की मानसिकता और इस तरह सीखने की उत्सुकता जो है शिक्षक को प्रसन्न करेगी और वो बहुत खुश होंगे आपको सिखाने के लिए। It's very natural. तो ये बहुत स्वाभाविक है। Even you go to the university or you go to school, you don't know so many things. यहाँ तक कि आप यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय में जाए, आप स्कूल में जाए, हो सकता है आप सारी चीज़ें न जाने। But you're sitting in the front row. लेकिन आप सामने की And कतार में you're बैठे very greedy, eager to learn. और आप बहुत लोभी हैं सीखने के लिए। You're doing everything possible according to what you have and understand to try to understand it and to practice it. आप बहुत ही गंभीरता से सीखने का प्रयास कर रहे हैं, जो भी आपके पास क्षमता है उसके आधार पे आप जानने का प्रयास कर रहे हैं, सीखने का प्रयास कर रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं। And then you're not challenging and confrontational with the professor. आप चुनौती नहीं दे रहे हैं उनको, जो है उनका प्रोफेसर के साथ बहस नहीं कर रहे हैं, Disrespecting him. या उनका अनादर नहीं कर रहे हैं। You're very eager, greedy to learn, to understand, asking nice questions, trying to genuinely understand, assimilate it. आप बहुत अच्छे अच्छे सवाल पूछ रहे हैं, बहुत उत्सुक हैं, बहुत लोभी हैं जानने के लिए, समझने के लिए विषय वस्तु को। Then even you don't know very much, the teacher will make every extra effort to try to help you if he's a good teacher. अगर वो अच्छे शिक्षक हैं तो अपना पूरा श्रेष्ठ देने का प्रयास करेंगे आपको सब कुछ समझाने के लिए, यहाँ तक कि आप कुछ ना जानते हो तो भी। Real teacher, qualified teacher is living for that, is inspired by that. असल एक योग्य शिक्षक उससे प्रेरित होता है, वो उसी के लिए जीता है। So it's very natural. तो ये बहुत स्वाभाविक है, It's very practical. बहुत व्यवहारिक है। If the professor, teacher, preacher goes in the room and nobody wants to be there, अगर शिक्षक प्रोफेसर रूम में जाता है और कोई सीखने के लिए तैयार नहीं है and they hate the subject matter. और वो विषय से पूरी तरह नफरत करते हैं। I remember the first time I went to statistics class. मुझे याद है मैं पहली बार जब स्टैटिक्स की क्लास में गया, And I bought the book, I went to the class, किताब खरीदी, मैं क्लास में गया and I opened the book and I listened to this topic. I hate statistics. और मैंने किताब खोली, मैंने विषय को थोड़ा सुनने का प्रयास किया, मुझे नफरत My है brain statistics से। is just pain thinking about it. मुझे इसके बारे में भी सोच के दर्द होता है। You see, I'm not wired for statistics. मेरा दिमाग तैयार नहीं, सही नहीं था स्टैटिक्स। Someone else may love it. किसी को हो सकता है इससे बहुत प्रेम हो, It's like in the vein, the DNA, you know? जैसे उनकी नसों में हो, उनके डीएनए में हो ये। So for me, I couldn't, I literally, that day, I transferred out of business major because of statistics. और उस दिन मैंने अपना विषय पूरी तरह बदल लिया बिजनेस से, क्योंकि उसमें स्टैटिक्स शामिल था उस विषय में। Right? So you're showing up, you hate the topic, you have no interest in it, right? You're not wired for it. How are you going to get the mercy of the professor or the teacher, right? आप वहाँ मौजूद हैं, आप विषय से पूरी तरह नफरत करते हैं, आप उसको सीखने के लिए तैयार नहीं हैं, आपका दिमाग उसके लिए तैयार नहीं है, तो कैसे प्रोफेसर या शिक्षक अपना कृपा आपको देना चाहेगा? So Prabhupada said, in spiritual life you should be perfectly anxious how to get this information. प्रभुपाद बताते हैं आध्यात्मिक जीवन में आपको पूर्ण रूप से उत्सुक होना होगा, लालसा रखनी होगी, कैसे आपको ये जानकारी प्राप्त हो सके। Like I have to have this information. कि मुझे ये जानकारी अवश्य होनी चाहिए। Not out of like some curiosity, oh let's see what is this topic. किसी जिज्ञासा के आधार पर नहीं है, वो चलिए देखते हैं इस विषय में क्या चर्चा हो रही है। Not even anxious to learn. यहाँ तक कि कोई उत्सुकता नहीं है सीखने की। Perfectly anxious to learn. पूर्ण रूप से लालसा रखनी होगी सीखने की। Greedy to learn it. लोभी होना होगा सीखने के लिए। That's how you get mercy. तब आपको कृपा प्राप्त हो सकता है। Either materially or spiritually. भौतिक रूप से या आध्यात्मिक रूप से। Isn't it? ऐसा है नहीं। And then the teacher will spend extra time helping you. और शिक्षक जो है अपना ज़्यादा समय देगा, अतिरिक्त समय देगा आपको मदद करने के लिए, आपको योग्य बनाने के लिए। Even you have such not so qualified. यहाँ तक कि आपके पास कोई योग्यता भी ना हो, He'll make you qualified. वो आपको योग्य बनाएंगे। By His mercy, by His effort, by His prayers on your behalf. अपनी कृपा से, अपने प्रयास से, आपकी तरफ से वो करेंगे वो। That's secret. ये रहस्य है। Otherwise, oh, I'm trying to purify my consciousness.
वरना हम कहेंगे वो मैं अपनी चेतना को शुद्ध करने का प्रयास कर रहा हूँ, I'm trying to listen and control my mind and my senses मैं माइंड को सुन के उसको नियंत्रण करने का प्रयास कर रहा हूँ on our own. स्वयं से। Right? Her mind is flying all over the, she said all over the three worlds, she's on an airplane, you know. उनका मन जो है पूरे तीनों लोकों में उड़ता है, वो कह रही है उनका मन जो है एरोप्लेन में, विमान में रहता है हमेशा। She's trying to connect on the Wi-Fi on the flight, you know, like and it's just not clean, you know, it's not a clean connection, you know. वो वाईफाई पकड़ने की कोशिश कर रही है विमान के अंदर और उसको साफ जो है संपर्क नहीं बना पा रही हो। Yeah. Does that help? So, क्या इसने आपकी मदद की आशुतोष? Gurudev, you say that one has to be greedy and anxious to learn. perfectly anxious, Prabhupada said, yeah. And then you also say sometimes be patient and step by step. Then these two. If you are suffering intolerably and you realize that, you will be perfectly anxious how to understand how to get out of that condition, isn't it? तो प्रभु का अगला सवाल ये है कि आपने बताया कि हमें लोभ होनी चाहिए, उत्सुकता होनी चाहिए जानने के लिए, लेकिन साथ में आप ये भी कहते हैं कि हमें धैर्य रखना चाहिए क्योंकि ये धीरे धीरे समझ में आएगा। तो गुरुदेव बताते हैं अगर आप ये समझ पाते हैं, आप जीवन में बहुत असहनीय कष्ट में हैं और आप उसका समाधान करना चाहते हैं, तो अवश्य ही आप जो है पूर्ण रूप से आप उत्सुक होंगे उसका समाधान करने के लिए। So if you're in a burning building, तो आप जलते हुए बिल्डिंग में हैं, right, and then the fire department man comes in with the mask on and the, you know, the air and his axe, right, and he's trying to get you out of the building. You don't say, well, I'm just gradually trying to figure out what it means to be in a fire, and on my own I'll figure out how to get out of the building, you know. तो अचानक से वहाँ कोई फायर डिपार्टमेंट का व्यक्ति आपके वहाँ पे आता है और हवा की बोतल लेकर और कुल्हाड़ी लेकर वो कहता है कि मैं आपको यहाँ से बाहर निकालने आया हूँ, तो आप ये नहीं कहेंगे ओ मैं थोड़ा पहले जानना चाहता हूँ ये आग के बारे में, बिल्डिंग में आग के बारे में, मैं इसको थोड़ा धीरे धीरे एक एक करके समझना चाहता हूँ, फिर मैं यहाँ से बाहर निकलूँगा। Come on, I'm trying to get you out of here. You know, follow me, you know. And you're like, well, how do I know you're a real fireman, you know? वो कहेगा कि मैं आपको यहाँ से बाहर निकालने के लिए आया हूँ, चलो यहाँ से मेरे साथ, मैं आपको यहाँ से बाहर निकाल सकता हूँ। और हम कहेंगे कि मुझे कैसे, मैं कैसे विश्वास करूँ कि आप असल फायरमैन हैं? Can you show me your credentials, you know? क्या आपका कुछ पहचान दिखाएंगे मुझे, पहचान पत्र? Right? You're in a burning fire. Someone's coming there to help you, and you're like, well, how do I know you're a real fireman, you know? आप चलते हुए आग में हैं, आपको मदद चाहिए, कोई आपकी मदद करने वहाँ आया है, आप कहेंगे कि मैं कैसे विश्वास करूँ कि आप असल फायरमैन हैं? Well, let me get you out of this building and you breathe some fresh air and then you figure it out. How does that sound? तो अगर मैं आपको इस बिल्डिंग से बाहर निकालूं और आपको ताज़ी हवा मिल सके, तब ये कैसा लगता है सुनने में, तब आप कैसा महसूस करेंगे, तब आप पता लगाइए। How's that for starters? तो कैसा रहेगा शुरुआत के लिए? No, I'm just gradually trying to work my way out of the building, you know. और नहीं, मैं धीरे धीरे पता लगाऊंगा इस बिल्डिंग से कैसे बाहर आना है। I don't need any help. मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। It's foolishness, isn't ये it? मूर्खता है। That means we're not realizing the reality of our situation and condition. इसका मतलब हम अनुभव नहीं कर पा रहे हैं हमारी परिस्थिति की सच्चाई को। So we're just like, I'm just curious, like if I wanted to leave this burning building, like, you know, what would I do? बस हम ऐसे जिज्ञासु हैं कि अगर मैं इस जलते हुए बिल्डिंग से बाहर आना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना होगा? It's not appropriate, right? ये सही तरीका नहीं है। You don't say, you know, I'm just a little inquisitive, like if this smoke is filling my lungs anymore, like how would I leave the building, you know what I mean? बस ये पता लगाने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये आग जो है मैं कैसे मेरे फेफड़ों में भरती जाए, तब मैं पता लगाऊंगा कैसे मैं यहाँ से बाहर आ सकूँ। Well, like, you know, I can still breathe, you know? मैं अभी भी सांस ले पा रहा हूँ थोड़ा-थोड़ा। So there's still time. अभी भी समय है मेरे पास। So if we don't realize the reality of how much trouble we're in and how dangerous and risky it is, then we will not be perfectly anxious to understand it. तो अगर हम अपनी परिस्थिति की सच्चाई नहीं जान पा रहे हैं, ये कितनी खतरनाक है और कितना खतरों से भरा हुआ है, तो हम उसको समाधान करने का प्रयास नहीं करेंगे। There's danger, material world, danger at every single step. भौतिक जगत में कदम-कदम पे विपदा है। And the greatest danger is death. और सबसे बड़ा खतरा है मृत्यु। Right? You see, these people are controlling the whole world
with this COVID by fear. आप देखिए ये जो लोग हैं ये पूरे दुनिया को नियंत्रण में किए हुए हैं इस कोविड के भय के आधार पे, Because people are so fearful of dying. क्योंकि लोग बहुत डरते हैं मरने से। So they're literally being manipulated and controlled by fear. और उनको जो है नियंत्रित किया जा रहा है इस भय से। Anyway, I don't want to, that's a whole nother topic. ये एक अलग ही विषय है, इसको हम छोड़ देते हैं। So, how much time do we think we have? तो हम क्या सोचते हैं हमारे पास कितना समय है? It's like you have a short window of an opportunity. How do you know that you'll get that opportunity again? What is the guarantee of that? जैसे एक छोटी सी खिड़की खुली है आपके लिए, आपके लिए एक मौका खुला है, तो ये कितने समय के लिए खुला है आपको कैसे पता चलेगा? There's no guarantee. कोई गारंटी नहीं है इसकी। So as soon as you hear the truth and you see Krishna's giving you opportunity, you should just grab it. तो जैसे ही आप देखते हैं आप कोई सत्य सुनते हैं और कृष्ण आपको मौका दे रहे हैं, आपको तुरंत ही उसको पकड़ लेना चाहिए। Even you don't know how it's going to end up or where you end up, it doesn't matter. That's exactly where Krishna is moving you. You just have to keep trusting Krishna and moving forward, and step by step Krishna will bring you through all of that. यहाँ तक कि ये भी फर्क नहीं पड़ता कि आप उसको पकड़ के अंत का क्या होगा, आप कहाँ जाएंगे। अब धीरे धीरे आपको कृष्ण विश्वास दे रहे हैं, आपको उसको पकड़ के कदम कदम पे धीरे धीरे आगे बढ़ते जाना चाहिए, जैसे कृष्ण आपको रास्ता दिखा रहे हैं। Right? You can figure it out later. Krishna will explain later how he helps you. बाद में आप पता लगा सकते हैं, कृष्ण बाद में आपको बता देंगे कैसे आपको इसको पता लगाना है। So you're in a burning building and the fireman comes in, you just take it. Okay, just get me out of here. आप जलते हुए बिल्डिंग में हैं और फायरमैन अंदर आता है, आपको कहता है मैं यहाँ से बाहर निकाल सकता हूँ, आप तुरंत उसकी मदद देके आपको वहाँ से बाहर निकल जाना चाहिए। Therefore smart, ये बुद्धिमानी है, really smart. ये असल में बुद्धिमानी है, This is real intelligence, ये असल बुद्धिमत्ता है, not the material gyan. ये भौतिक ज्ञान है। Right? Someone can be materially intelligent but completely practically foolish. कोई भौतिक रूप से बहुत विद्वान हो सकता है लेकिन असल में आध्यात्मिक रूप से मूर्ख हो सकता है। So what is the value of that so-called knowledge तो उस नाम के ज्ञान का क्या महत्व है if they're practically foolish अगर व्यवहारिक रूप से वो मूर्ख है and they don't know what's in their own best interest? और उनको स्वयं को नहीं पता उनके लिए श्रेष्ठ क्या है। Who cares about your academic qualification? शिक्षण योग्यता पे क्या फर्क पड़ता है? Even many people in the United States, if they're hiring people, right, they look, okay, what education you have, right? But they want to see, how practical person, matured practical person are you? यहाँ तक कि अमेरिका में भी आप जब जाते हैं काम करने के लिए, आपकी भौतिक योग्यता के बजाय वो ये देखते हैं कि ये व्यक्ति कितना व्यवहारिक है, कितना मैच्योर है, विकसित है कार्य को करने के लिए। All the other technical things can be taught. If you have those other basic skills, people skills, communication skills, practical skills, life skills, street smarts, right? You have all of that, you can learn the technical thing later, no problem. जो तकनीकी चीज़ है ये सब छोटी मोटी चीज़ें धीरे धीरे सिखाई जा सकती हैं, लेकिन अगर आपके पास असल में बेसिक जो स्किल्स हैं, लोगों से बातचीत करने का तरीका और लोगों के साथ बर्ताव करने का तरीका, ये सब आपको अच्छे तरीके से आता है तो बाकी सारी चीज़ें तकनीकी चीज़ें आपको अपने आप ही सिखाई जा सकती हैं। That's more valuable. वो ये ज़्यादा कीमती है पहले। I remember when I joined different companies, corporations after university, they said the first thing is we have to figure out how to make you forget everything you just learned in that university. जब मैं यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय ख़त्म करने के बाद कंपनी में कॉर्पोरेट में जॉब करने के लिए गया तो वहाँ पर उन्होंने मुझे सबसे पहले चीज़ ये कहा कि सबसे पहले हमें ये तैयार करना होगा जो भी आपने विश्वविद्यालय में सीखा उसको आप कैसे भूलें, इसके लिए हमें आपको पहले तैयारी देनी पड़ती। It's more or less useless, outdated. ये पूरी तरह बेकार है जो भी आपने सीखा, पूरी आउटडेट हो चुका है, ये Not practical. आप व्यवहारिक नहीं रहा। That was just to see if you could learn something. ये बस वो देखने के लिए था कि आप कुछ सीख सकते हैं या नहीं, Like some tests. कुछ परीक्षा थी Now बस। forget all that, अब उन सब चीज़ों को and now भूल we'll जाओ। really teach you what are we trying to do here, isn't it? अब हम आपको असल में सिखाएंगे कि हम यहाँ क्या करने का प्रयास कर रहे हैं। So there's theoretical understanding and then there's practical realization, isn't it? एक मौखिक साक्षात्कार है और एक व्यावहारिक साक्षात्कार, व्यावहारिक समझ है। And the same in spiritual life. There's a theoretical understanding of spiritual knowledge, and then there's a practical
realization and demonstration of that knowledge. तो आध्यात्मिक जीवन में भी ऐसा ही होता है, एक मौखिक साक्षात्कार, मौखिक ज्ञान, और दूसरा जो है आत्म साक्षात्कार किया हुआ ज्ञान. So that's scientific, तो ये वैज्ञानिक तरीका है, not theoretical, academic. मौखिक या That शैक्षणिक won't help तरीका. you. ये हमारी मदद नहीं कर पाएगा. Must be practically realized. अवश्य इसका आत्म साक्षात्कार होना चाहिए. And without mercy of Guru and Krishna, how is anyone going to practically realize Krishna? और बिना कृष्ण के कृपा के कोई कैसे व्यवहारिक साक्षात्कार प्राप्त कर पाएगा कृष्ण का? Unless Krishna reveals himself, no one can understand Krishna. जब तक कृष्ण स्वयं को प्रकट नहीं करते, प्रकाशित नहीं करते, कोई कृष्ण को नहीं समझ सकता. And Krishna says, only by bhakti will I reveal myself to you. और कृष्ण बताते हैं सिर्फ भक्ति से मैं अपने आप को प्रकाशित करूंगा. If you come in karma, jnana, yoga, I'll hide myself from you, Krishna says. अगर आप कर्म, ज्ञान, योगा से मेरी तरफ आएंगे तो मैं अपने आप को ढक लूंगा. You come in a mood of bhakti, you want to surrender and serve me, loving devotion, I'll give you intelligence how to do it. अगर आप मुझे शरणागत करना चाहते हैं, मुझे प्रेम में सेवा के मनोभाव से आना चाहते हैं, मैं आपको बुद्धि दूंगा कैसे आप मुझ तक आ सकते हैं. Okay? ठीक है. You see, I know you guys have so many questions, that's why I have to do this type of thing. Otherwise you'll not be satisfied. मुझे पता है आप सभी लोगों का बहुत सारा सवाल है, इसलिए मुझे इस तरह का कार्य करना पड़ता है, वरना मुझे पता है आप लोग संतुष्ट नहीं हो पाएंगे. Because then you just be like, I have so many questions, I have so many questions, right? फिर आपने तो हमेशा ऐसे रहेगा, मेरे पास बहुत सारे सवाल है, बहुत सारे सवाल हैं. Krishna, is Nitya Bhadda getting purified to Nitya Siddha? I just read tomorrow yesterday about this Nitya Siddha and Nitya Bhadda. There are two types of souls. So we're just thinking whether What is it? Nitya Bhadda is getting converted to Nitya Siddha. Is a Nityabhada Jiva, is he able to be purified to become Nityasiddha? If he gets a Nitya Siddha Kripa, तो उनका सवाल है, कोई जो बद्ध जीवात्मा है, क्या वो शुद्ध का होकर नित्य सिद्ध बन सकता है? तो गुरुदेव ने बताया कि अगर उसको कृपा प्राप्त हो नित्य सिद्ध का, that's the only way. यही एकमात्र तरीका है, Especially in Kali Yuga. विशेष करके कलियुग में. So if you get the mercy of Nitya Siddha, Premi Bhakta, Shuddha Bhakta, तो आपको कृपा प्राप्त होता है नित्य सिद्ध का, प्रेमी भक्त का, शुद्ध भक्त का. they purify your mind and your intelligence, वो शुद्ध करेंगे आपके मन और आपकी बुद्धि को. then you'll be able to directly hear Krishna, Guru Sadhu Shastra, तो आप सीधे सीधे कृष्ण, गुरु, साधु, शास्त्र को सुन पाएंगे and develop unflinching faith. और अटूट श्रद्धा विकसित कर पाएंगे. Without that mercy, we cannot develop that type of unflinching faith, बिना उस कृपा के हम इस तरह की अटूट श्रद्धा नहीं प्राप्त कर सकते, because we'll still be on false ego, intellectual, material, mental platform. क्योंकि फिर हम मिथ्या अहंकार और बुद्धि के स्तर पे और मानसिक स्तर पे रहेंगे. Mercy is required. कृपा की जरूरत है. Prabhupada said advancement in your spiritual life is more or less completely depending on the mercy of your spiritual master. प्रभुपाद बताते हैं आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कम या ज़्यादा पूरी तरह से अपने आध्यात्मिक गुरु के कृपा पे आधारित है. It says the spiritual master is mercy incarnation of Krishna. ऐसा बताया जाता है कृष्ण के कृपा की श्री मूर्ति हैं गुरु, And bona fide guru has the power of attorney of Krishna. और प्रमाणिक गुरु के पास कृष्ण की शक्ति है. And he's intermediary between us and Krishna. और वो हमारे और कृष्ण के मध्यस्थता करने के लिए है. So his mercy most essential. तो उनकी कृपा सबसे ज़्यादा आवश्यक है. And Krishna is doing everything and giving us everything through the guru. और कृष्ण सब कुछ कर रहे हैं, हमें सब कुछ दे रहे हैं गुरु के माध्यम से. Through Chaitya Guru, चैत्य गुरु के माध्यम से, an external manifestation, spiritual master, और बाह्य प्रकट गुरु आध्यात्मिक गुरु से, Bhakta Bhagavata, Grantha Bhagavata. भक्त भागवत, ग्रंथ भागवत. All of that mercy required. ये सारी कृपा की जरूरत है. So we're either trying to do it all on our own and understand everything on our own by our own strength, or we're realizing that doesn't work and only mercy is required. तो हम या तो अपने स्वयं की समझ, स्वयं की शक्ति के आधार पर सब कुछ समझना चाहते हैं, सब कुछ करना चाहते हैं, या हम ये समझ पा रहे हैं कि हम ये स्वयं से नहीं कर पा रहे हैं, कृपा की जरूरत है हमें करने के लिए. And as long as you're asserting your intelligence, your mind, your senses, your logical
ability, your experience, as long as you're asserting any of that, that means you're not being submissive. तो जैसे ही आप सभी चीज़ों को सामने ला रहे हैं, अपनी मन, अपनी बुद्धि, अपनी इंद्रिय, अपने सारे तर्क, अपने अनुभव, ये सारी चीज़ों को आप सामने ला रहे हैं, इसका मतलब आप जो है विनीत भाव से नहीं हैं। Means we're being assertive. यानी हम स्वयं को सामने ला रहे हैं। So as soon as you realize that doesn't work, तो आप जैसे ही जितना जल्दी ये समझ पाएंगे कि ये then काम you नहीं won't करता, apply any assertive nature to understand it. तो फिर आप इस तरह कोई भी खुद को सामने लाने का तरीका नहीं लगाएंगे, Then उसको जानने only का। submissive oral reception is required. तो सिर्फ विनीत भाव से श्रवण करना ये जरूरी है, ये समझ पाएंगे। So you have to receive perfect intelligence from Krishna, Krishna Parampara, Guru Sarvan Shastra, through submissive oral reception. तो हमें पूर्ण ज्ञान पूर्ण स्रोत से प्राप्त करना होगा, गुरु परंपरा से, प्रामाणिक परंपरा से, इस विनीत भाव से श्रवण की प्रक्रिया से। That is how to receive this fourth dimensional transcendental association and realization. इस तरह के इस चौथे आयाम के साक्षात्कार, इस तरह के संग या साक्षात्कार का हम अनुभव कर सकते हैं, समझ सकते हैं। So first we have to be exhausted and realize that the asserting ourselves doesn't work. You have to be 100% convinced of that. तो हमें 100% आश्वस्त हो जाना होगा, हम पूरी तरह हमें थक जाना होगा कि हम स्वयं को जब आगे लाकर चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं, ये काम नहीं करेगा। No skepticism, cynicism, suspicion, doubting, challenging, none of that. किसी तरह का दोष निकालना और बुरा सोचना और संदेह उत्पन्न करना, विश्वास न करना, चुनौती देना, ये सब चीज़ें हम जब करना बंद कर देंगे। And it's tough not to do that because we're trained to do that in cultivating knowledge. और ये करना बहुत मुश्किल है क्योंकि हमें ऐसा ही प्रशिक्षण मिला है किसी भी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। Now all of a sudden we're looking for transcendental knowledge, and now we have to do exactly opposite of that. That's not exactly easy. तो जब हम अब ये दिव्य ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, तो हम यही तरीका फिर से अपना रहे हैं, और इसीलिए इस तरीके को अपनाना ज़्यादा मुश्किल है। We always just get a microscope and just focus our intelligence and mind and senses and whatever instruments and measuring instruments we have to dissect it and understand it and realize it, isn't it? तो हम इस तरह के तरीके में ज़्यादा लगे हुए हैं कि किसी तरह का कोई माइक्रोस्कोप लाना, चीज़ों को अपने मन, बुद्धि, इंद्रियों को पूरी तरह केंद्रित करके जानने का प्रयास करना, सीखने का प्रयास करना, ये हमारी आदत है। Right, super microscopes or super telescopes, right? सुपर माइक्रोस्कोप और सुपर दूरबीन, ऐसी चीज़ों को ढूंढना। But those are all three-dimensional subject matter. तो ये सब जो है 3 आयाम के विषय वस्तु हैं। So we're trying to understand fourth-dimensional subject matter. हम जो है चतुर्थ आयाम के वस्तु को समझने का प्रयास कर रहे हैं। So you cannot understand fourth-dimensional subject matter with three-dimensional instruments. तो आप चौथे आयाम के विषय वस्तु को नहीं समझ सकते जबकि आपके पास तीसरे आयाम के उपकरण हैं। So if your mind, intelligence, senses are three-dimensional capable, then how you can apply that and assert that and understand fourth-dimensional topic is not possible. तो आपके मन, इंद्रिय और बुद्धि तीसरे आयाम के उपकरण हैं, तो कैसे आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं चौथे आयाम के विषय को समझने के लिए? So first you have to understand those instruments won't work. सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि ये उपकरण काम नहीं करेंगे। You have to realize that. आपको इस बात का अनुभव करना And then you have to be intelligent, capable, wise enough not to assert intelligence, mind and senses. फिर आपको बुद्धिमान होना होगा, समझदार होना होगा ये जानने के लिए कि अपने आप को सामने न लाना, अपने मन, बुद्धि और इंद्रियों को इस तरह से अपना भौतिक मन, बुद्धि, इंद्रिय को सामने न लाना। And we cannot do that unless we realize the soul और हम ये नहीं कर पाएंगे जब तक हम समझेंगे कि हम आत्मा हैं as being separate from intelligence, mind and senses. और ये भिन्न है मन और बुद्धि से और इंद्रियों से। So basically our soul is trying to directly hear from Krishna. तो मूलतः हमारी आत्मा सीधे सीधे कृष्ण से सुनने का प्रयास कर रही है through purifier medium of the spiritual master शुद्ध माध्यम से आध्यात्मिक गुरु के and through the scripture, through the shastra, और शास्त्र के माध्यम से and from within the heart, Paramatma, Chaitya Guru. और हमारे हृदय से परमात्मा चैत्य गुरु से Guru, Shastra, Atma, Rupa. गुरु शास्त्र आत्म रूपे। 3 ways Krishna gives the soul
intelligence. 3 तरीके से कृष्ण बुद्धि देते हैं आत्मा को, And that's received through submissive oral reception. और ये प्राप्त किया जाता है विनीत भाव से श्रवण करके, And it's a very subtle science. और ये बहुत सूक्ष्म विज्ञान है, And hardly anyone understands it, and hardly anyone knows how to do it. और मुश्किल से कोई ये समझता है और मुश्किल से कोई ये जानता है इसको कैसे किया जा सकता है। That's why we have to hear from those who do understand it इसलिए हमें उनसे सुनने की ज़रूरत है जो इसको समझते हैं and who have realized it. और जिसने इसको साक्षात्कार किया है। And by the mercy of Krishna and those devotees, then we can, by their mercy, understand it. और फिर कृष्ण की मर्जी से और कृपा से और भक्तों की कृपा से हम ये समझ सकते हैं, And without their mercy, we'll never understand it. और उनकी कृपा के बिना हम कभी समझ नहीं सकते। No matter how materially intelligent you think you are. निर्भर ये मायने नहीं रखता भौतिक रूप से आप कितने बुद्धिमान हैं, Because then you'll just be, even Lord Brahma could not understand Krishna. यहाँ तक कि ब्रह्मा भी कृष्ण को समझ नहीं पाए। Right? Even Krishna bewildered Lord Brahma. कृष्ण ने यहाँ तक कि ब्रह्मा जी को भी भ्रमित कर दिया। So we're more intelligent than Lord Brahma? तो हम ब्रह्मा से भी ज़्यादा बुद्धिमान हैं? No, I'm going to figure it all out. I have an MBA or PhD or, BS. मैं सब कुछ बता रहा हूँ, मेरे पास MBA है, PhD है, BS है, BS. Make sense? मतलब बनता है? That's why when people say, just chant and dance and take prasad, go back to Godhead, why are you complicating this whole thing? इसलिए कई बार जब लोग कहते हैं क्यों तुम इस बात को इतना जटिल बना रहे हो, बस नाचो, प्रसाद दो और जप करो, भगवत धाम वापस चले जाओ। For someone, who can't begin to understand this topic, then okay, chant, dance, take prasadam, eventually, gradually, you'll figure it out, तो अगर कोई शुरुआत में चीज़ों को समझ नहीं पा रहा है तो उनके लिए ठीक है, आप जब कीजिए, नाचिए, प्रसाद दीजिए, धीरे धीरे जो है आप धीरे धीरे समझिए, धीरे धीरे पता लगाइए। Prabhupada says, like, if you have a disease and you take some medicine, you take the medicine and it kills the disease, you don't exactly know how the medicine is working. कई बार आप बीमार होते हैं, आप किसी तरह की दवाई लेते हैं तो आपकी बीमारी जो है धीरे धीरे ठीक हो जाती है, तो आप हो सकता है आपको ये समझ में ना आए कि दवाई में क्या है, लेकिन वो बीमारी ठीक हो जाती है। Maybe later you can figure it out chemically or biologically how it's working. हो सकता है बाद में आप पता लगाएं कि उसमें क्या क्या रसायन है, क्या क्या जैविक चीज़ उसके अंदर डाली गई है, बाद में आप इसका पता लगा सकते हैं। If you take poison, right, it kills you. You don't know how exactly how that works, but you're dead. और इसी तरह अगर आप कोई जहर ले लेते हैं तो आप मर जाएंगे, तो हो सकता है आप पता ना लगा पाएँ कि आप कैसे मर गए, लेकिन आप मर तो गए जहर लेकर। You can't figure it out later. आप बाद में उसका पता लगा सकते हैं। Unless you're in your next life and you remembered your previous life, that's possible. अगर आप अगला जन्म लें और आपके पिछले जन्म का आपको याद हो आप कैसे मरे, तो फिर आप पता लगाना चाहिए क्या हुआ। Oh, I got poisoned in my last life. और मैंने पिछले जन्म में मैंने जहर खा लिया था। Back to Adam, he put some poison in my food, भक्त आदम ने कुछ जहर मिला दिया था मेरे खाने में। He was preaching to me. वो मुझे प्रचार कर रहा था। Somehow it had a poisonous effect. I don't know. उसमें कुछ जहरीला प्रभाव था उनके प्रचार में। The idea is not to kill the patient, विचार नहीं, मरीज को मारना योजना नहीं है। He thinks he's doctor, he's preacher, right? But he's killing all the patients, ये सोचता है ये वैद्य है, ये प्रचारक है, लेकिन ये मरीज को मार डालता है। Oh, I was supposed to take out the left lung. और मुझे बायां फेफड़ा निकालना था। My left or your left? Right. It's like facing me or facing you. किसका दायां और किसका बायां फेफड़ा निकाला था? मेरी तरफ देखते हुए ना उसकी तरफ देखते हुए कौन सा निकालना था? All right, any last thing? कोई आखिरी चीज? We're getting a little technical. हम थोड़ा तकनीकी But that's good. लेकिन ये अच्छा है। You guys are technical minded, right? आप बहुत तकनीकी दिमाग वाले लोग हैं। So this is a spiritual technology. तो ये आध्यात्मिक तकनीकी है। But it's very subtle. और ये बहुत सूक्ष्म है। It's beyond the microscope and the telescope. ये माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप से भी परे है। It's beyond the unlimited material universes. ये असीमित भौतिक ब्रह्मांड से भी परे है। It's in the transcendental, fourth dimensional realm. ये दिव्य चौथे आयाम पे है। So how you're going to travel there and understand that? तो आप कैसे वहाँ या सफ़र कर सकते हैं और उसको समझ सकते हैं?
Prabhupada says, you don't even know what's happening in the room right next to you. प्रभुपाद बताते हैं अगले कमरे में क्या हो रहा है आपको ये भी नहीं पता है. And Prabhupada said, if you close your eyes, you don't even know what's happening on the other side of the eyelid, you know. प्रभुपाद बताते हैं अगर अपनी आंखें बंद कर लें तो आपको ये भी नहीं पता है कि आपके आंखों के दूसरी तरफ क्या हो रहा है. So what are we going to understand? तो हम क्या समझेंगे? So first we have to realize we're completely disqualified as it is. तो पहले हमें ये समझना होगा हम पूरी तरह से अयोग्य हैं. And we need mercy from those who are qualified. और हमें कृपा की ज़रूरत है उनकी जो योग्य हैं. And we have to understand what is the mood and the mentality and behavior to deserve that mercy. और हमें ये जानने की ज़रूरत है क्या मनोभाव क्या मानसिकता है कि हम उस कृपा के योग्य बन सकें, लायक बन सकें. That is the secret of success. ये सफलता का रहस्य है आध्यात्मिक जीवन में. That's how to get the kripa. इस तरह से कृपा प्राप्त हो सकती है. Kripa siddha. कृपा सिद्ध. Are you a guru? क्या आप गुरु हैं? Huh? Don't you need a guru first before you become a guru? क्या पहले आपको गुरु की ज़रूरत नहीं है कि आप गुरु बन सके पहले? Prabhupada said, self-made guru cannot become a guru. प्रभुपाद कहते हैं कि स्वयं निर्मित गुरु नहीं बन सकता. He must be ordered and authorized by previous acharyas. उसको अवश्य आदेश मिलना चाहिए और सशक्त होना चाहिए पूर्व आचार्य से. So unless you're ordered and authorized, nobody can be guru. जब तक किसी को आदेश न मिले या जब तक किसी को सशक्तिकरण न मिले This कोई is गुरु नहीं बन this is सकता. type of cheating. ये एक तरह का ठगना है. So you should give up that तो आपको इसके बारे में सोचना चाहिए if you're serious. अगर आप गंभीर हैं. Oh, you must have been praying today. अवश्य आप प्रार्थना कर रहे होंगे आज. That's very good. बहुत अच्छा है. Your followers must have been praying for you to help you आपके सारे फॉलोअर अवश्य आपके लिए प्रार्थना कर रहे होंगे because they have love and affection for you. क्योंकि उनको आपसे बहुत प्रेम है. Any last thing? कोई आखिरी चीज? Good? ठीक All है. right? Everyone's good? सभी ठीक है? Everyone's all right for now? सभी ठीक है अभी के लिए? Good? ठीक है? All right. Thank you everyone very much. Appreciate it. बहुत बहुत धन्यवाद सभी का. मैं बहुत Shri Shri सराहना Gauri करता हूँ. Tai ki, Srila Prabhupada ki, Srila Gaur Govinda Swami, Srila Gurudeva ki, Samaveda Bhakta Vrinda ki, Gaura Premanande, Hari Hari Bol. Yeah, this is